sorry for being late. So It's a good to have you here, sir. Can't wait to learn from. it's my pleasure to give my little bit of my experience to share. Right? So this is just a brief thing about my profile, what I've done in my life. So we are running a research analyst for the students' capital. So listen with the same. Whatever we are doing here is, as a disclaimer, it's only for the education purpose, and there's no recommendation to be given. The attempt is not to portray anything negative about the management, because I do have respect for all the promoters. Without their efforts in manipulating the financials, I would have lost my job. So my bread and butter is the manipulation, what they do. So what we see, why the governance is so important in investing journey. Everybody has their own hypothesis. So in bull market, nobody cares about the governance. Every stock will go up really. But in the longer run, if you see, most of the companies outperform the market. But the companies which are having the low governance standard or having some accounting manipulations, they tend to crumble over the period of time. So normally हम लोग बात करते हैं किसी company की, so we say 3 pillars of to build a business. You have the production, then the product is there, then you have the sales team. But the most important pillar which nobody talks about is accounting. I always focus on the accounting part, because I feel नींव अगर मजबूत नहीं होगी आपकी, तो any edifice or any building will collapse over the time. And अगर आप पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करो, तो most of the promoter जब होता है कि when you have this high debt scenario, या आपने अकाउंट में कुछ गड़बड़ करी है, so you may have done some jaggery of 100 rupees, but to close that holes, you have to pay 1,000 or 10,000. So this is a premise of my hypothesis or my analysis of income. Better governance standard in India plus informed investor is equal to better India. So first of all, nothing is foolproof. It's all because you have the limited information available. So the most important aspect which I always teach to the people or always tell them that you should ask questions to your colleagues, to your bosses, or to the promoters. Sometimes होता है, especially हमारे जो दुनिया है उसमें होता है कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो I'll sound stupid. क्या फर्क पड़ जाएगा? You are not here to portray that you are the smartest guy on the earth. They are the more smarter people than you. You always find better people than you. But अगर आप एक basic question पूछ भी लोगे तो it is not going to derate your image in front of it. So question पूछो, बिंदास पूछो. जितना stupid question होगा उतना ही better answer, और it will make you a better analyst. So मुझे याद है 2007-8 में जब मैंने स्टार्ट करा था, so I asked my colleague कि यार ROI कैसे करूँ? यार आप कैसे मजाक कर रहे हो सर, आप तो सीए हो और आपको ROI नहीं आता? नहीं आता भाई. And he laughed on me, and उसको लग रहा था मैं जोक कर रहा हूँ. But actually I'm not joking, because मुझे उससे एक्सेल पे IRR कैलकुलेट करते नहीं आता. And I learned from it. तो ठीक है ना, it may sound stupid, but if I look at my journey from 2007 till date, so it has transformed a lot. So पूछने में कोई बुराई नहीं होती यार, कुछ भी पूछो. In today's session, so we can keep it small one as well. So you can ask me any damn question. It will ultimately lead to can say you will learn better. So मुझे याद है एक रिपोर्ट लिखा था मैंने when I came back second. So that 2 part of my journey from 2007 till 2012. The second journey started from 2016. So मैंने जो फर्स्ट रिपोर्ट लिखा था तो उसमें मैंने बैंक्स को मेल लिखा था. आई रोट मेल्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. मैंने बोला सर आप अकाउंट खोलते हो, किसी को लोन देते हो, सो कैसे लोन देते हो? आप एनबीएफसी हो तो क्या सबका अलग अकाउंट बैंक अकाउंट होता है जिसमें उसको कैश डिपॉजिट करना है, बैंक चेक डिपॉजिट करना है? एंड पीपल लाउड इट कि यार तू कैसा क्वेश्चन, और उसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता कि व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन.
बिकॉज उस टाइम पे इफ यू रिमेम्बर डिमोनेटाइजेशन हुआ था एंड सब लोगों को एनुअल रिपोर्ट में एक डिस्क्लोजर देना था कि हमारे पास 500 के पुराने करेंसी के नोट कितने आए हैं, ओल्ड करेंसी के 2000, फिर 2000 के कितने नोट लिए, नए कितने लिए। सो सर मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी के अंदर डिस्क्लोजर दिया था, ऑडिट कमिंग था, उसमें उसने बोला था कि दे इन द ऑडिट ट्रे कि किसने कितना पैसा डिपॉजिट करा, तो वी कांट आइडेंटिफाई कि किस बोरोवर ने कितना पैसा डिपॉजिट करा। सो हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर सकते। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा था कि यार एक बोरोवर ने आपको कैश में पैसा दिया, आइडियली आप क्या करें? तो आई एम डिफॉल्ट, ठीक है, मेरा ईएमआई था 1 तारीख को आना, मैं 1 तारीख को पैसा नहीं दे पाया, तो मेरा डिफॉल्ट हो गया। बैंक वाला मेरे घर पे आएगा और आई गो टू बैंक एनबीएफसी, मैं स्कूल में मुझे पैसा देना है, मैं उसको कैश दूंगा, वो मुझे एक स्लिप देगा, स्लिप के पीछे लिखेगा डिनोमिनेशन में कि इसने मुझे 500 के इतना नोट दिए, 100 के इतने नोट दिए, 50 के इतने, वो सब स्लिप लेके जाएगा। he'll have hundreds of collection एक पर्टिकुलर सिटी में, वो उसका एक समरी बनाएगा, इस बोरोवर से मुझे इतना पैसा मिला, उसकी रिसिप्ट ये है, एंड वो डिपॉजिट करेगा उसके बैंक एनबीएफसी के बैंक अकाउंट, बिकॉज एनबीएफसी कैन नॉट हैव डिफरेंट बैंक अकाउंट, बैंक कैन हैव। अब अगर ये सब हुआ है तो ऑडिट ट्रेल तो क्रिएट हुई है, तो अगर ऑडिटर बोला ऑडिट ट्रेल क्रिएट नहीं हुई तो व्हाट डज इट मीन? ब्लैक का पैसा व्हाइट हो गया क्या डिमोनेटाइजेशन के बाद? सो मेरा रिपोर्ट डिमोनेटाइजेशन पे लिखा था, तो काफी लोगों ने डिमोन पे लिखा, पर माय क्वेश्चन इज नॉट ऑन कि वो सही था गलत था, माय क्वेश्चन इज बॉस ये हुआ है तो व्हाट एक्शन आरबीआई हैज टेकन, व्हाट एक्शन गवर्नमेंट हैज टेकन, एंड व्हाई देयर इज द ऑडिट ट्रेल कि हर डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट तो हो गई, तो फिर ऑडिट ट्रेल क्यों नहीं मिला? सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। आप जब उससे पूछोगे कि बैंक का प्रोसेस क्या है, उसी में उसका आंसर छुपा। सो यू इट मे साउंड स्टूपिड टू एनीवन, बट एक्चुअली यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर स्मार्टर देन हिम। तो रेड फ्लैग्स होते हैं, सो मेरी बहुत सारी रिपोर्ट जिसमें आई टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच डजंट ऐड अप, देयर मे बी सम बिजनेस रीजंस टू दिस। सी, पहली बात तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और इट हैज अप्लाइड ऑन माई सेल्फ, कभी भी आप फॉरेंसिक करो और इफ यू आर रीडिंग एनी कंपनी, डोंट रीड इट फ्रॉम अ प्री डिसाइडेड माइंडसेट से मत पढ़ो कि बस मुझे तो आज चोरी ढूंढनी है, मुझे तो आज फ्रॉड ही ढूंढनी है, यार दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, मुझे लगता है सबसे सुना है बहुत अच्छी कंपनी है बस, आई हैव टू राइट अ बाय। जिस दिन आपके दिमाग में ये हो गया ना, उस दिन आप रिपोर्ट लिख नहीं पाओ, अच्छी रिपोर्ट नहीं लिखते। तो इट हैज हैपेंड विथ मी, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट आई रिटन माय लाइफ, मुझे पहले से पता था चोर है, आई स्टार्टेड वर्किंग, 20 दिन हो गया मुझे कुछ नहीं मिला, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड सिंगल इशू इन दैट, आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई जस्ट गेव अप। एक हफ्ते तक मुझे कुछ काम नहीं, एंड आफ्टर 1 वीक आई रियलाइज कि यार बस मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रेश। मैंने 5 महीने काम करा उस रिपोर्ट, एंड बिना सोचे कि ये अच्छा है बुरा है, बस आई जस्ट कीप नोटिंग पॉइंट्स, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, एंड जब आई व्हेन आई एड अप, सो आई एक्सपोज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड इन इंडिया। सो अगर आप प्री डिसाइडेड माइंडसेट से जाओगे ना कि ये आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव होनी है पॉजिटिव होनी, सो यू नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस गुड रिपोर्ट इन योर लाइफ। हर कंपनी को नया कंपनी सोचो, ये सोचो ना मुझे कुछ पता ही नहीं, तो देन यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट, देयर मे बी सम गुड बिजनेस मॉडल, कुछ इनोवेटिव कोई बिजनेस मॉडल आता है या कुछ इनोवेटिव अकाउंटिंग कर, सो यू हैव टू बी इट्स लाइक इट शुड बी लाइक प्लेन बुक, हमारा प्लेन बोर्ड है इस पे कुछ नहीं लिखा, अब हमको उस पे लिखना है। So then, whatever your analysis says, whatever reading says, you have to follow those. आपको किसी आप अपना, so that's why मैं किसी की रिपोर्ट नहीं पढ़ता, so I don't read any others analysis report, ऐसा नहीं कि वो अच्छी रिपोर्ट नहीं बनाते, I have respect for them, but अगर मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ूंगा तो then I'll be biased, या मेरा खुद एक ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एजम्पशन बन जाएगा कि ये कंपनी ऐसी है या ऐसी ऐसा, so that's why I don't read any financial newspaper, I don't read any financial magazine, no books, nothing. बिकॉज अगर मैं किसी और का थॉट पढ़ूंगा तो मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं आएगा। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू कि or discouraging you not to read, you can read a lot, you can learn from them, but because I have reached to the scale that I don't need to read them, and मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो थॉट प्रोसेस है ओरिजिनल है, उसी को रिफाइन मुझे करती है। सो ट्राई टू बी
डोंट बी बायस, बायस जितना होना है अनबायस रहो। सोचो ये मत खराब है अच्छा। इट ऑल्सो हेल्प यू इन लाइफ। किसी बंदे से मिलते हो उसको देख के लगता है ये अच्छा है बुरा है, क्या फर्क तुझे क्या पता यार। व्हेन यू टॉक टू हिम लाइक व्हेन आई केम बैक 2017, तो काफी सारे एपिसोड हो चुके थे। सो लोगों को, सो लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे मेट मी दे गॉट डिसअपॉइंटेड। यार ये तो ऐसा है यार, मतलब तो क्या मेरे दोस्त ही होना चाहिए भाई? मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ यार, मैं भी नॉर्मली दिखूंगा, मेरे भी भाई दो आंखें होगी, एक नाक होगी, दो कान होगी, यही होगा ना। और कुछ तो नहीं पैदा कर सकता है। सो आप एक इमेज बना रखी है ना कि अच्छा नितिन मंगल ऐसा इतना बड़ा ब्रांड नेम है तो ऐसा आदमी होगा, ही विल बी वेरी बॉस, एकदम ईगो में बात करेगा, मैं तो बॉन्ड हूँ, जेम्स बॉन्ड हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता यार। सो इनफैक्ट जितने लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑल दीज बिग शॉट्स, they are so humble, and as they grow big in the system they become more humble. Like Kenneth was my first client. He's so humble, like I have huge respect for him. So I met Durgesh bhai, these guys are ज्योति वर्धन जयपुरिया। आप उनसे मिलो यार, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा आदमी है। ज्योति ने मुझे पूछा था एक बार, मुझे याद है इंटरव्यू देने गया था, मुझे बोलता है वो यार, सो ही उनके सिस्टम में जगह नहीं थी बिकॉज दे हैव डिफरेंट मॉडल, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन हायर यू बट वी कैन हायर यू इन दिस थिंग। फिर से मुझे पता तेरे को जॉब की प्रॉब्लम है, तो मुझे बोल आई विल सेट यू समवेयर एल्स। नहीं सर जॉब की कोई इशू नहीं है, आई ऑलरेडी हैव जॉब बट आई एम लुकिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। सो बट दीस गाइस आर सो गुड। सो व्हेन यू स्पीक टू देम, व्हेन यू टॉक टू देम, सो यू फील सो गुड अबाउट द थिंग्स, एंड आपको लगता है लाइफ में हम लोग झगड़ रहे हैं या किसी को ईगोइस्टिक है बस, मैं तो बॉन्ड हूँ, क्या है यार, यू आर नथिंग। देयर आर thousands of people who are better than you in your city itself, so I'm not talking about the world. So बहुत सारे एनालिस्ट है जिनसे मैं सीखता हूँ फॉरेंसिक। वो कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आते, कभी बोलते नहीं, बट आई लर्न फ्रॉम देम। मैं उनको फोन करता हूँ, भैया मुझे समझा दे कैसे फॉरेंसिक वैसे। तो यू ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल, एंड आप कुछ किसी के लिए कोई बायस, कुछ एक किसी के लिए कुछ बायस मत बनाओ या किसी इमेज मत बनाओ, जो है सब ठीक है। किसी भी कंपनी आ रही है उसके बारे में कोई भी पास होगा, चोर था अच्छा था, रीड इट एंड जो लग रहा है उसका एनालिसिस करो। सो there are some frameworks, right? So basic framework होता है forensic functional statement analysis के और governance के। So ये छोटा सा एक पिक्चर है, कैसा आपका asset दिखता है, कैसा आपका liability दिखता है, how your equity looks like, right? So you have on the asset side, you have net block of asset, you have CWIP, your intangibles, then you have other fixed assets, then there are investments, cash, then you have your debtors, inventory, and working capital. So which is, if you include this, then it will lead to, if you इसमें अगर कैश फ्लो ऐड कर दो तो आपका टोटल असेट बन जाएगा, बिकॉज हर साल आप उसमें कैश ऐड करते हो तो आपका असेट बन जाएगा। सेम आपका लाइबिलिटीज है, यू हैव डेट्स, यू हैव शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, अदर प्रोविजंस है। देन यू हैव द इक्विटीज, इज योर शेयर कैपिटल प्लस प्लस योर कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका, जो आप साल में पैसा कमा रहे हो वो आ गया, और योर रेस कैपिटल, सो इट विल लीड टू योर इक्विटीज। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लुक्स वेरी, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इतना ऑलरेडी, आपको रटा हुआ होगा इसे, बट दिस इज व्हाट आई लर्न इन माय लाइफ इज दैट, so these may looks like कि आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिख रहा है, asset liabilities and which is balance sheet, but there is some cash flow as well, here is P&L as well. These are ये हमारे लिए बाइबल है, ये तीन स्टेटमेंट है, दे शुड टॉक टू ईच अदर। अब कैसे बात करेंगे? So every item which have effect into P&L, it should have effect into cash flow, it should have effect into balance sheet। वो सिंक्रोनाइजेशन में है कि नहीं? So like when I do my analysis, so mostly मैं कैश फ्लो को तो इम्पोर्टेंस, तो फॉर मी फंड फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट। पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, देन उस अगर वो रिकनसाइल हो गया तो कुछ कंपनी में तो ऐसा हुआ कभी रिकनसाइल ही नहीं हुआ, पैसा कहाँ आया कहाँ गया, सिंपल है, बैलेंस शीट रहता है, इट्स वेरी इजी टू रिकनसाइल, बट कुछ कंपनी में रिकनसाइल ही नहीं होता। दैट इज वेयर द फ्रॉड कम्स इन पिक्चर। जब मैनेजमेंट से पूछा रिकनसाइल नहीं हो रहा, उसने एक हफ्ता तक समझाया, उसने हर मेथड लगाई, पर सर फिर भी 50 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। फिर उससे पूछा क्या हुआ था, बोला सर हमको पैसा नहीं मिलता है, वर्किंग कैपिटल लोन नहीं मिलता, तो हमने एक फर्जी इन्वेंट्री दिखा दी थी। वहाँ आपका हो गया कि ठीक है,
whatever he has done, so always focus on these three instruments. These three are very important. Now उसको थोड़ा सा well down करते हैं. Then you have operating profits plus non-operating profit equal to the profit for the equity shareholder. Then you have operating income minus operating expenses, which is your EBITDA. Then you have non-exceptional, non-operating or exceptional items, non-operating items. Then you remove expenses out of that. Now, why this is important? Because your EBITDA to cash flow ratio is very important. So ideally, EBITDA to cash flow ratio, historically, if you look at, there should not be a deviation of more than 20%. So आपने EBITDA post-tax EBITDA. Either you say post-tax EBITDA or you say pre-tax operating cash. So 20% means what? अपने 100 रुपए का प्रॉफिट था, EBITDA है. तो आपका pre-tax OCF पे होना चाहिए, या तो 80 होगा या 120. Then it is a comfortable range. कि कंपनी जितना पैसा ऑपरेटिंग से कमा रही है उतने उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो. डेविएशन उससे ज्यादा कमाया तो इट विल गिव यू सिग्नल दैट इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए व्हाई दिस इज नॉट इन सिंक. दिस रेशियो शुड नॉट बी कि आपने एक साल का देखा उसमें, यू शुड सी इट ओवर द लॉन्ग टर्म. So at least 5 years आप why do I find, because कुछ बिजनेस होते हैं सिक्लिकल बिजनेस. आपका एग्रोकेमिकल बिजनेस उसमें हार्वेस्टिंग एक साल में होती है, दूसरे साल नहीं. So एक साल देखोगे तो 150% हो जाएगा, सेकंड ईयर में देखोगे 50% आएगा. इसको क्लब वोट ऑफ विल बिकम 100%. तो सिक्लिकलिटी को हटाने के लिए आपको लॉन्गर टर्म देखना. बट द थंब रूल इज बेसिक, इज द थंब रूल ऑफ एनी फंड, any other foreign accountant is ratio should not deviate more than 20%. If it is more than 20%, then there is a chances that कुछ गड़बड़ होगा या there is some exceptional item which came in. More on the P&L side, same thing what we discussed. But then you have another item which is contingent liability. A lot of people, they don't recognize liability in the books of account, they keep it liability. If your contingent liabilities are more than 50% of the net worth, then there's something that one fine day कोई बॉम्ब गिर सकता है जो छुपा हुआ है, जो आपने नहीं पढ़ा. आपको लगेगा एक क्वार्टर रिजल्ट खराब आया, साल भर का प्रॉफिट चले गया, स्टॉक विल टैंक बाय X%. then you realize कि यार बॉस क्या हो गया, how can I miss कि इसके बाद liability था जो आने वाला था, मुझे पता ही नहीं था. But it was always there to notes to account whereby he disclosed the contingent liability. So you should not ignore any contingent liability plus capital commitment for the disclosure. अब रेगुलरिटीज कैसे होती है? आपको अपना EBITDA इंफ्लेट करना है, आप नॉन ऑपरेटिंग को ऊपर ले जाओ, ऑपरेटिंग में दिखाते हैं, राइट. सो नॉन ऑपरेटिंग प्लस एक्सेप्शनल आइटम जो है, इनकम जो है, आप यहाँ से शिफ्ट करके बिलो द लाइन शिफ्ट करके आप ऊपर लेते हैं. वो कैसे होता है? फॉरेन एक्सचेंज गेन. फॉरेन एक्सचेंज गेन कैन बी ऑफ टू टाइप. एक तो आपका जो सेल परचेज रिलेटेड है वो है, एक आपका जो डेट से रिलेटेड. तो डेट वाला रिलेटेड नीचे आएगा, इट विल बी पार्ट ऑफ अदर इनकम, इट विल नेवर बी पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग इनकम. सम तो एक कंपनी बड़ी फेमस कंपनी लेड वाली में इज वन ऑफ द लाइक आई गेस 200 बेगर. Sorry, sir, didn't get the name of the company. I haven't mentioned the name of the company. Okay. So it's into lead recycling में है. मुझे उसका पीएनएल कभी समझ नहीं आया. एंड ऑल ऑफ सडन उसके पीएनएल में कभी कोई कमोडिटी गेन आता है, कभी फॉरेन एक्सचेंज गेन आता है. मैं बोलता हूँ इसने तो कभी इतना करा ही नहीं, तो 10 साल में तो कभी इतना दिखाया नहीं, सडनली इतना कितना हो गया. इसका हेजिंग है ना कुछ है, तो सडनली इसका ना फॉरेन एक्सचेंज को भी इतना मूवमेंट हुआ है. वन फाइंड यू रियलाइज कि यार बहुत सारा इसका फॉरेन एक्सचेंज गेन आ गया और कमोडिटी गेन आ गया, इसलिए आपको प्रॉफिट मिल गया. बट दिस इज
whether this profit is sustainable or not. This is not sustainable. So अगर मुझे कंपनी को एनालाइज करना तो मुझे सस्टेनेबल अर्निंग के ऊपर एनालाइज, तो दीज आर द वन ऑफ इन नेचर. सो मुझे उसको एडजस्ट करना, बिकॉज बीइंग द फॉरेंसिक एनालिस्ट, as a chartered accountant or as a financial analyst, you can highlight n number of errors in the finance. आप मुझे दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी का एनालिस्ट रिपोर्ट लाके दो, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग्स क्या है. बट द आवर जॉब इज टू क्वांटिफाई दैट एंड एडजस्ट दैट इनटू द फाइनेंस. तो आपका वैल्यूएशन मॉडल प्रॉब्लम है. सो अगर कंपनी आप बोल रही है कि मेरा रेवेन्यू 100 रुपए का, तो उसमें से उसने अगर 20 रुपए का एक वन ऑफ ले लिया, सो मेरा एनालिसिस मुझे 80 रुपए ही उसका रेवेन्यू ले, मुझे 20 रुपए को हटाना है, 20 rupees will go down mad. It will have effect on the network. But for a sustainable earning, जब मैं forecast करूँगा तो मैं 100 पे नहीं करूँगा, 90 पे करूँगा. So to adjust these things very important, जो बहुत सारे लोग नहीं करते. And इसलिए बोलते हैं कि CA, despite being chartered accountants are not good forensic analysts. They can be good forensic auditors, but they are not good forensic analysts because they don't understand this thing. कि forecasting में इसको कैसे यूज करना. सेम भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नीचे ले जाओ, वन ऑफ दिखा दो. आपने बोला भैया मैंने कमोडिटी का हेजिंग करा था, वाइल मूवमेंट आ गया, तो वन ऑफ इन नेचर. वाइट इज वन ऑफ इन नेचर. आपका बिजनेस ही कमोडिटी रिस्क का है, जहाँ पे आप हेजिंग करते हो, कभी लॉस आएगा कभी प्रॉफिट आएगा. तो अगर मैं फोरकास्ट करूंगा अभी, तो आई ऑलवेज फैक्टर इन द कमोडिटी प्राइसेस माय फोरकास्ट. तो उसमें एब्रिविएशन होगा तो ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा. कंपनी जैसे स्मार्ट होती है, दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले विद दिस नंबर्स. और कभी बोलती है ठीक है मेरी इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट हो गई, रिसेंटली कंपनी में हुआ, बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया आपने, तो हमारी इन्वेंट्री का राइट ऑफ लेना पड़ा. सो इट्स अ बिजनेस थिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू वन ऑफ, बिकॉज वो अपनी बिजनेस मॉडल चेंज करा, वो ऑब्सोल्यूट हो. ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, तो इट हैज हिट माय ऑपरेटिंग बिजनेस, इट शुड हिट माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, should not be below my operating. This is how the moment आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर जाएगा, तो पैट विल गो अप, सेट्स एंड इक्विटीज. आई एम गिविंग शॉर्ट, सो दे कैन बी मोर Q&A आई गेस. अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बोल देना भाई, दिस टू फास्ट, जस्ट स्टॉप मी. तो अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम कर दिया, आपका नीचे तो कम, आपका पेट बढ़ जाएगा. सो यू कैन यूज दिस आइटम एंड ट्रांसफर इनटू P&L, बैलेंस शीट. आप इधर मत दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ. उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपका असेट्स बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ जाएगा, फिर जैसे लायबिलिटीज. These are the like few, can say, can use this presentation to see how these three statements talk to each other. This is just diagrammatic presentation to tell you that when I say they should be in sync with each other, how they, what is the effect अगर एक आइटम ऊपर गया तो दूसरा आइटम कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, कैश फ्लो में क्या इफेक्ट. अब ना हम लोग बोलते, पूरी दुनिया बोलती है तो आपने जो कुछ नया तो बोला नहीं कि EBITDA should be in sync with operating cash flow. अभी मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो फर्स्ट करूंगा तो क्या करूँ, can't do it. That's why you should not go for the reported number. ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे फर्स्ट होता है, आपने किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो जैसे मूवमेंट होता है, तो हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हम लोग का थोड़ा लेजी होता है, कौन करेगा. ऑपरेटिंग कैश फ्लो में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल उसमें अदर लाइबिलिटीज होती है, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज. अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आप कभी भी जाके देखते हो शेड्यूल में क्या है, पता पड़ता है उसमें शॉर्ट टर्म डेट्स, इसका मूवमेंट आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो में करते हैं. शॉर्ट टर्म डेट कैनॉट बी पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो.
acceptance is the most thing. I guess 99.9% companies in India, they show acceptances, movement in acceptances as a part of operating cash flow, which is incorrect. Because acceptances are nothing but short-term working capital. आपके बिहाफ पे बैंक ने आपके सप्लायर को पैसे दे दिए, इसके लिए इंटरेस्ट आपको भरना है, वर्किंग कैपिटल लिमिट है, सो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पार्ट क्यों होना चाहिए? But 99.9% companies in India, they do consider it as operating cash There's a request from online. If you can speak a little louder, they're not able to hear you. flow. Louder. Sorry. I'll try. No, it's fine. मेरा आवाज इतना, मेरा पिच इतना हाई है नहीं, ठीक है, I'll try. तो sometimes financing activities होती है जो आप ले लेते हो, मिल लेते हो. So companies are, very innovative in that way. So you have to be very careful while reading this statement that what is coming in where, whether it is as per the standard or not. Or as per the general practices. Standard भूल जाओ यार, accounting auditing भूल जाओ. Just think logical, whether this item should be part of operating cash flow or investing cash flow or financing cash flow. इतना समझ में तो आता है. Don't go by accounting standard. Rest of the brains into forensic analysis are not accountants. They may not be aware of all the accounting standards, but they are much better analysts compared to the accountants. Definitely. Just have the common sense, because we understand the financial statement. So we know what is investing, what is operating, and what is financing. So just look at the item. I'll give you some examples on that, how you can notice these items, where these items are lying and where not lying. So investing upar gaya, then you have the financing goes up. Right? So what is a broad outcome, right? So P&L, if you are oversetting earnings, in a way you are oversetting the operating cash flow, operating profit. In your earnings time travel, in few years it will go up. So especially in 2 good years it will go up and bad years it will come down. But these good years and bad years of what? This is the bull market and bear market. This is not the business cycle. This is the bull market and bear market. Because bull market we want to command more valuation. So you will tend to show a higher growth. Then in balance sheet, you are glorifying the balance sheet. You are showing a better cash flow. So if we look at this particular example, so again, that again 2 principles, how to check whether the revenue is true or not. There are 2 items in the balance sheet. Is debtors, multiple revenue. So if your movement in a growth in debtors or unbilled revenue is faster than revenue growth, then there's a chances that company has aggressively booked revenue in books of account. So sorry, can you repeat? So if your growth in receivable or growth in unbilled revenue is higher than or faster than the revenue growth, then there's a chances that you are overstating your revenue. And the confirmation comes from the provision numbers. So in future year, in long run, if you see, if your provision keeps on increasing, then it will give you the confirmation that this company has inflated its revenue by playing with the accounting policies or booking fictitious debtors or booking fictitious unbilled revenue. So if you look at this company, right? So this company has shown a growth of unbilled revenue, which is 109. It has jumped to 210. Revenue got doubled. Unbilled revenue got doubled. Then it has slowed down in 17. 18 again slowed down. In 19, it has again approximately doubled. But if you look at the provision trajectory, 15, 16, there was no provision. And suddenly 17, you see provision came into it. So in the bad year, when the growth was not there, your provisions are coming into picture. Because these provisions or these fictitious revenue you booked earlier in the good cycle. Same way, 19, again your provision number becomes declining. But again, in 21, if you look at 20 to 21, the growth is not that high. But then your provision number has doubled again. So this is a classic case of being
defrauding the investor by showing a fictitious revenue. And most of the time, these companies collapse or the nine or you think 7 to 10 years time. These companies may not collapse into 1 or 2 years. If you look at a longer period, these companies will collapse. Right? Because the accumulation of the unbilled revenue or receivable is so high that it is going to dent your profitability by a heavy percentage. Sometimes it may be as high as 100% of the profitability for the year. Then we have this. So, we read about the gross block, right? We read about the depreciation policy. Have you ever checked what is the depreciation rate companies are charging? Nobody reads them. So, for 10 years, if you see what is the depreciation rate, whether it is in a particular range or not, then you'll have fair idea. If there's a huge deviation between the depreciation charges, rate, what they actually charge, then you'll come to know that this company is aggressive or not. I guess they might be taking you a lot on this. Best practice. But these deviations are again questionable. You can always ask the question, management, that why these deviations are coming. So, like depreciation rate from 14% to 60%, huge. So why this? So whether this is the impairment which you are hiding in the name of depreciation. Then in the goodwill assumption, in the assumptions, we have this useful life of assets. Sometimes they change the useful life by drastic number. For this particular company, 19, the useful life for building was 60 years. For 20, it becomes 6 years. Now, nowhere in the world you will depreciate the building by 6 years. Your depreciation life for the building is quite higher, maybe 20 years plus. But buildings doesn't become obsolete in very short span of time. Computer from 3 to 6 years to 1 to 6 years. Again, you are depreciating it faster. Air conditions. So every line item, if you see in this particular company, all the items, they are depreciating much faster. Now, why this is important? So see, how this will tell you about, okay, there are issues in the financial sector. But if you look at this company and if you compare this company with the other peers, then you know how it is going to affect. So there was a company, famous company, which came up with IPO. They say, I have the best in class ROC and ROE numbers when it came for the listing. And it was visible in the numbers. Nobody can question. Nobody has seen the numbers before listing. What has happened? So what this company has done, they have changed the accounting policy. They were aggressively depreciating the assets. And by the time IPO came in, the size of asset became very minuscule. So what you have done, by aggressively depreciating it, you have taken a hit on the P&L. In a way, it is eroded your net worth. So when I calculate ROE of the ROE becomes much higher compared to any other company. Then you say, okay, this company is wonderful. No, this company is not wonderful. If you adjust this company along with the competitors, this company may look inferior to you. So this helps you a lot into the peer comparison. When somebody claims and say that this company is having one of the best ROC or profitability numbers in the industry, you have to check it, what he has done in past, what kind of accounting policy he has followed, what kind of depreciation rate he has. Because if two companies who are very close competitor to each other, their depreciation rate must be into similar range. There may be 10%, 20% deviation in that, but not more than that. So if you are not doing this, then you are punishing a good company and you are encouraging a bad company. You are tend to give a higher valuation to the badly governed company. So if you look at this particular example, the asset turn, because this asset turn improves a lot. So asset turn, this asset turn from 0.8, it has come to 8.3%, 8.3x. So there's a revenue growth, definitely, but on top of revenue growth, there is the fixed asset has come down drastically for the period of time.
This is because of the aggressive accounting policy, aggressive depreciation policy what they had. However, your fixed asset turnover ratio has become 10x, but your total asset turnover ratio has only doubled these years. So these two numbers are not in sync with each other. Again, we don't read this key audit matters, whereby the company has said that the auditor has said that overstatement of revenue is the key audit risk. So it could create an incentive for the higher revenue to be recognized at the year end, before the control of underlying goods or service has been transferred to the customer. So there's an incentive to the customer, to the management. How the incentive is if there's a professional management, especially backed by the private equity. If the performance of company will be better, his ESOPs and bonus will go higher. In a company owned by family, they'll get a higher valuation in the market. So same way, if you look at the provision for debtors for this company, it's around 16 to 22%. Which business in the earth whereby you sell goods worth of 100 rupees and you are getting realizing only 180 rupees? ऐसे बिजनेस करोगे तो दुकान टूट जाएगी ना. So on the day when I'm selling my goods to anyone, I know कि इसमें से 80% पैसे आएगा. And if you see, if you look at from the sales perspective, it is 5% of the total revenue. So मेरी कंपनी का मैंने बोला 15% का ग्रोथ है रेवेन्यू का. So you'll give or 20% growth. You'll tend to give higher multiple to the company because it's a high growth company. But if you factor in this company becomes a normal growth. Then your growth multiple will vanish. Right, sir? Now this was one of the example, the company which has happened, जहाँ पे बहुत बार आग लगती रहती है, हर साल आग लगती है. Their inventory numbers are in. There is no issue in the inventory as such, but if you look at the inventory in transit, it always remains very hefty proportion as a total percent of revenue, as a percent of inventory. अब their business isn't to that, right? कि आपका import का business है तो ship आती है उसमें you have a lot of inventory transit because transit period is long. So आप बहाना भी मार देते हो कि कोविड था, सप्लाई चेन में इशू था, तो 90 days का जो पीरियड था वो मेरा 120 days का हो गया और it may be 180 days. But this company just keep on growing, keep on growing. कोविड चले गया, सब कुछ हो गया, फिर भी ये बढ़ रहा है. वन पॉइंट पता पड़ा कि कंटेनर आए नहीं करते. So I have a debate with my friend who is the fund manager. When I was negative on this company, he said, "इसका एक ship अटक गया चाइना, वो नहीं आया because of lockdown. So आएगा. Then this number will be good. ना कब आएगा? Next quarter में आएगा. Hopefully. Next quarter में नहीं आया. फिर कब आएगा? उसके next quarter में आएगा. फिर बाद में भी राइट ऑफ आ गया, कंटेनर तो नहीं आया. So these are the few examples from various line items, right? It will help you in when you share the presentation with them. Correlate each and every item. How company makes food of everyone. Right? And when you ask them, sir, ऐसा कैसे हुआ? This is the Ind AS thing. This is the IFRS thing. तो समझा देना भाई क्या बोल रहा है. Why you to say IFRS Ind AS? समझा दे क्या बोला भाई, क्या होता है अकाउंटिंग में, कैसा होता है सर, ऐसा मोमेंट होता है. तो this company says कि मेरा current portion of deferred revenue is this much. अब what do you mean by current? Whether life is less than 12 months, तो ओपनिंग बैलेंस है, तो नेक्स्ट ईयर पूरा रिवर्स जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो पूरा रेवेन्यू हो जाना चाहिए कन्वर्ट. 100 रुपए का डेफर्ड रेवेन्यू है, नेक्स्ट ईयर जो मूवमेंट होगा डेफर्ड रेवेन्यू से विड्रॉ होगा वो 100 रुपीज का होगा, एंड प्लस उसमें कोई एडिशन भी होगा तो इट विल बी मोर देन 100%. यहाँ पे जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी वो हायर होता है, कभी लोअर होता है. सो कंपनी कर क्या रही है? दिस इज ओनली कैन से अर्निंग मैनेजमेंट.
जिस साल मेरा प्रॉफिट खराब आने वाला था या रेवेन्यू डिग्रो था उस दिन मैं ज्यादा विड्रॉ कर लिया। अपनी बैंक के तो ओडी है, ओडी ज्यादा विड्रॉ कर लो, फिर बाद में तो ओडी में तो ज्यादा पैसा डाल देंगे। एंड व्हेन आई आस्क द मैनेजमेंट दिस इज इट्स इन डेज थिंग, भैया तेरे से अच्छा इंग्लिश मुझे पता है, मुझे समझा देंगे। And they'll never tell you why this is happening. But so the idea about all these examples is that you don't look at only short sighted कि हम लोग एक साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, लास्ट 23-24 का नंबर देखा, 24 का नंबर है, 23 का देखा, बहुत या एक्सेल बनाया उसमें सब डेटा ए सिक्योरिटी से ले लिया या किसी भी एग्जाम्पल कोई से भी डेटा से ले लिया, बट माइन्यूटली कोई नहीं आता है। आपने बोला डेफर्ड रेवेन्यू इतना है, ठीक है, बट डेफर्ड रेवेन्यू में करंट कितना है, नॉन करंट कितना है, वो तो किसी ने देखा ही नहीं। नीतीश राय सर उन्होंने बोला कि अनबिल्ड रेवेन्यू का ज्यादा होगा मूवमेंट, तो वो एग्रेसिव हो गया या नहीं, आपने उसका ब्रेकअप तो देखा ही नहीं क्या हो रहा है। अब लाइक दिस इज एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल, यहाँ पे आपको नो बडी ऑन द अर्थ विल कम टू नो कि क्या हुआ कब। तो एक हमारे पास टेबल होता है, आई टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, आई नॉट ओनली वर्कड ऑन इंडियन कंपनीज, आई वर्कड ऑन द ग्लोबल कंपनीज, be it Chinese company, be it Australian, be it New Zealand, be it US, Canada, whatever country or name, जहाँ तक अंग्रेजी में फाइनेंशियल मिलते हैं ना सब पढ़े। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन डिस्क्लोजर्स आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इतना अच्छा डिस्क्लोजर कहीं नहीं मिलता, इतना डिटेल कहीं नहीं मिलता। दूसरे का बिजनेस वाइज काफी अच्छे डिटेल होता है, बट अकाउंटिंग वाइज इतना अच्छा नहीं होता। जैसे हमारे इसमें स्टैंडर्ड होता है, कंसोल होता है, वहां पे कुछ होता ही नहीं, वहां पे एक ही होता है, कंसोलिडेटेड, नो स्टैंडर्ड। आपको कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि सबसे से कितना आ रहा है, इससे कितना आ रहा है। तो दे नॉट गिव यू टू फाइनेंशियल सेट ऑफ कंपनीज। वहां पे एमसीए भी नहीं कि 100 रुपए डालो और निकाल दो। तो स्पेशली यूएस में इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू पे hefty price to get the standard financials. These are not the small fee कि आपने 100 रुपए का फीस दिया और सब डेटा निकाल। तो ये एक टेबल होती है जो मोस्ट ऑफ द कंपनी में होती है, जब नहीं पढ़ते क्या है, ठीक है, डिस्क्लोजर है कि फेयर वैल्यू इंस्ट्रूमेंट मेजर है अमोर्टाइज कॉस्ट सेंस, टेबल दिया है, हाँ ठीक है सब बढ़िया है। बढ़िया है तो देखा ही नहीं आपने बढ़िया है। तो आप इसमें देखो नीचे लाइब्रेरीज में कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइब्रेरीज 44,401। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी? 50,377। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या बोलता है? कंजर्वेटिव होते हो आप। कंजर्वेटिव होते हो मतलब आप हायर लाइब्रेरी से प्रोग्रेस करोगे, असेट में प्रॉफिट में लग रहा है कि कहीं गड़बड़ है तो आप नहीं करो, यहाँ से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे लाइब्रेरी आपको। और वन फंड आपको पता पड़ेगा इसको तो पेमेंट ज्यादा देना था यार, तो कम दिया, कैसे हुआ ये? मेरा तो वैल्यूएशन मॉडल भी कर गया। मैं तो बोला था कि 44,000 का पेमेंट करना था, इसको तो 50,000 का पेमेंट करना पड़ा। ये स्टेटमेंट कोई पढ़ता ही नहीं, बिकॉज वी ऑलवेज टेंड टू फॉलो कि यार एक दिन में एनुअल रिपोर्ट पढ़ दो, बस 3 घंटे में एनुअल रिपोर्ट पढ़ दूंगी, 300 पेज है, फटाफट पढ़ दो। क्या पढ़ना है, मतलब ठीक है, 5-6 स्टेटमेंट पढ़ लिया, नोट्स तो अकाउंट पढ़ लिया, आगे मेरे एमडीए ने पढ़ लिया, एनुअल रिपोर्ट खत्म। 300 पेज का डॉक्यूमेंट है, क्यों बनाया भैया? मतलब मेरे बॉस से आई यूज्ड टू डू ऑडिट, मेरे बॉस ने सिखाया था कि डॉक्यूमेंट कोई भी पढ़ता तो पेज वन से पढ़ता। क्या ऐसा पेज वन पता है कंपनी का नाम क्या होता है? एक बार तो उन्होंने फाइनेंशियल गलत लिख दिया था, उन्होंने, उनको पता ही नहीं था। तो हम दूसरा तरह का फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं उसका, तो लास्ट पेज ऑडिट रिपोर्ट थी। अरे यार, तो ऑलवेज लीगल डॉक्यूमेंट को भी पढ़ता है, एनी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट तो पेज वन से, कंपनी का नाम ये है, इसका फाइनेंशियल ईयर ये है, उसके बाद चलो। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ यू डोंट नो कहाँ पे क्या लिखा है। फॉर्म कैन बी लाई एनीवेयर, इट्स लाइक लैंड माइन, राइट? आपको नहीं पता लैंड माइन कहाँ क्या है, और जहाँ आप चूके वहां पे दुर्घटना घटी हुई हुई बात है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, तो आपने देखा ही नहीं है अब क्या हो गया। एंड हियर द डिफरेंस इज नॉट दैट ड्रामेटिक, बट समटाइम्स मैंने देखा लाइफ में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो एक कंपनी है, मोटरसाइकिल कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है, इनकी कंटीजेंट लायबिलिटी मैच नहीं होती। कंटीजेंट लायबिलिटी देखोगे तो बहुत छोटी है, और आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि कंटीजेंट लायबिलिटी 160% ऑफ नेटवर्क।
उसमें 7 करोड़ 8 करोड़ की तो एक ही लाइबिलिटी, जिस दिन बस हो गया उस दिन आप बोलोगे भैया हो गया कल्याण। देन इन्वेस्टिंग कैसे होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। फाइनेंसिंग बता दिया, इन्वेस्टिंग कैसे होता है, तो आप फिक्स डिपॉजिट, आपने बोला नॉन करंट इंक्रीज और डिक्रीज इन नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स, आप वहां पे आके देखो तो क्या लिखा है, टर्म डिपॉजिट विद मेच्योरिटी ऑफ मोर देन 12 months, इसका मूवमेंट आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो में कैप्चर कर लिया। इट में भी प्लस, इट में भी माइनस, बट इट विल गिव यू अ फॉल्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो नंबर। सो चलो इस केस में तो यहाँ से डिक्लाइन हुआ है, तो आपको नंबर कुछ हो जाए, तो 4000 से आपका 1500 हो गया, तो आपको 156 का आउटफ्लो दिया, बट एक्चुअल आउटफ्लो इस बचा है, आप उसको हटा दो, बिकॉज मैक्सिमम is 371 minus 73, you remove that difference, then you see what is operating cash flow. So reconciliation is very important, right? It will not reconcile 100%, definitely, because there are some items which we are not aware of when these adjustments are being done, but 90% तो मैच करता है, 80 to 90% मैच करता है, so if there's a drastic difference, then you should doubt or you should raise the questions, ये हो क्या रहा है, वो रिकंसाइल करने का किसी के पास टाइम नहीं है, और हमारे पास बहुत टाइम, हम लोग यही करते रहते हैं बैठ के बस। बहुत अभी कुछ कंपनी से बात करते हैं विदाउट नेमिंग देम। बोर तो नहीं होता ना, फॉर थिंग इज क्वाइट बोरिंग, मे भी बोर है तो बोल बोल Now, just give you 3 examples, तो आपने बात कर ली कहाँ कहाँ क्या पकड़ना है, और एक कंपनी को ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग में कैसे पकड़ना है, तो हम लोगों ने 3 कंपनी एनालाइज करी थी, उसके नाम भी बड़े अच्छे अच्छे लगे हैं, तो आप मन लगा रहे हैं इसे पेमेंट होना चाहिए, again same disclosure, so this is what misguided intellect. So what this company is doing, right? So they are playing with the innovative of accounting. So they are playing with the contract asset slash unbilled revenue to both. So what is the meaning? How it is accounted for? How they, how it helps them to get the revenue top line. There is a high provision of the billed and unbilled revenue. What does it indicate? Research and development में क्या हुआ? How it is. So this was a classic example, and I remember why I am able to catch this company. Is there was a company named as Ceridian. Is a US company. इस पे मैंने काम करा काफी साल पहले। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने वो अकाउंटिंग देखी। देन आई केम टू नो कि ऐसा भी होता है। दिस वाज अ लर्निंग फॉर मी 2019 और 20 व्हेन आई। सो ये कंपनी करती क्या है? और दिस मिसगाइडेड इंटेलेक्ट करती क्या है? दिस कंपनी इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, SaaS सॉफ्टवेयर सर्विस बेचती है। So ideally जब SaaS बिजनेस होता है तो इट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? इम्प्लीमेंटेशन होता है, सप्लाई होती है, सो मोर देन 1 year कॉन्ट्रैक्ट, you recognize revenue over the period of time, maybe 1 year, maybe 2 years, maybe 3 years. So you have POCM comes into play, percentage of completion method. Now जैसे सबका स्टेज होता जाएगा, तो उससे माइलस्टोन अच्छी होगी। तो दैट टू थिंग, राइट? एक आपका स्टेज हो रहा है, आपने बोला मैंने 10% काम करा, पर आपका जो बिलिंग हो रहा है वो आपका 20% में बिलिंग कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, यू कैन बिल टू द क्लाइंट, राइट? बट आपने 10% का काम तो कर लिया ना, तो आपने कॉस्ट इनकर कर दी, तो आप 10% का अनबिल्ड रेवेन्यू और आपके 10% का कॉस्ट बुक करते हो।
तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाएगा। बट यू कॉन्ट ब्रिंग टू क्लाइंट, बट सप्लायर को पेमेंट तो देना है, जब आपने कर दिया सैलरी देनी है। सो वैसे आपका डिफरेंशियल आता है। सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनबिल्ड रेवेन्यू एंड रेवेन्यू? बिकॉज इस कंपनी के मैनेजमेंट ने मुझे बोला था, मैंने रिपोर्ट लिखी, उसने रिपोर्ट पढ़ी नहीं, तो उसने कॉल एनालिस्ट कॉल करा, उसने बोला कि एनालिस्ट ने मेरे ऊपर रिपोर्ट लिखी, उसको धंधा समझ नहीं आता है कि पीओसीएम क्या होता है, और हमारे धंधे में अनबिल्ड रेवेन्यू होता है। तो इनको नहीं पता, मैं कौन बोल दिया सर, उनको समझ नहीं आता, या हमको धंधा समझ में आता है। तो and that is why the best analysis, best policy analyst is the guy who can understand the business as well and who can correlate all these ratios with the number, with the business model. अगर धंधा समझ नहीं आएगा तो आप कभी कोरिलेट नहीं कर पाओगे, then whatever you are telling is just red flags. At the end of the day, you are not going to achieve anything. So this is how the contract system of unbilled revenue comes into play. आप बिल नहीं कर सकते, बट आपने एक स्टेज कंप्लीट कर दिया तो आपने उसका रेवेन्यू बुक कर लिया। कॉस्ट तो बुक करनी है, बिकॉज मैचिंग कंसेप्ट है, कॉस्ट बुक करोगे तो रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। Nowadays the thumb rule we talked about कि रिसीवेबल होगा और अनबिल रेवेन्यू होगा, उसकी ग्रोथ अगर फास्टर है रेवेन्यू से, तो रियली रेड फ्लैग, ये देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। तो हम गए इसके ऊपर, तो आगे सेकंड साइड गड़बड़ होगी। तो कंपनी ने क्या बोला, थोड़ा बोर कर रहा हूँ, लाइन पढ़। The group derives revenue primarily from the software development and related services, and from the licensing of the software products and related services, together referred as the software related services. Arrangements to deliver software products generally have three areas: license, implementation, and AMC. For allocating the transaction price, the entity has measured the revenue in respect of each performance obligation of a contract at its relative standalone selling price. The price that is regularly charged for an item when sold separately as evidence of standalone selling price. This is the annual report accounting purpose. Nothing wrong with this. तीन सर्विसेज आप लाइसेंसिंग रेवेन्यू है, इम्प्लीमेंटेशन पहले लाइसेंस आपके पास है, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर एमसी। तो ये वही वाली बात हुई, हम गए क्लाइंट, हम गए शॉप पे, भैया ठीक है हमको ये सामान चाहिए, ठीक है, आपने बोला चलो हमको बुके चाहिए, आपने बोला फ्लावर कितने का है, 10 रुपए का एक फ्लावर। अच्छा मुझे 5 गुलाब के फूल दे दो, 50 रुपए गुलाब के फूल। अच्छा भैया इसके ऊपर थोड़ा दूसरे फूल भी लगा देते, मतलब 20 रुपए का वो है, 70 रुपए के वो है, फिर थोड़ा कोली में भी लगा देना, वो 10 रुपए का, 80 रुपए का, फिर नीचे रिबन लगाना है, वो 5 रुपए, 85 रुपीज का होगा। पर उसमें बोला सर मेरे को तो आप बुके बना दे, वो सर आप 70 रुपए ले जाओ, राइट? तो वेन यू बाई द बंडल्स, ऑफन इट कम्स विद डिस्काउंट, तो आपको बुके 70 रुपए का, सब आइटम को अलग अलग करोगे तो 85 रुपए का। अब ये कंपनी क्या बोल रही है, मेरे 3 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, मुझे फूल लगाना है, पॉलिसी लगानी है, और पीछे रिबन लगाना है, तीनों मेरी अलग अलग सर्विसेज है। तो मैं तीनों का रेवेन्यू जब बुक करूंगा, तो मैं सबकी स्टैंडर्ड जो प्राइस है उस पर बुक करूँ, ठीक है? दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो ऑन। ठीक है सर, कर दिया आपने, तो आपने क्या करा, 70 का रेवेन्यू बुक नहीं करा आपने, 85 रेवेन्यू करा। That is So SSP fuels revenue by creating contract asset which is non cash, ठीक है? अभी तो आपने सिर्फ ऑर्डर दिया है, उसने फूल लगाया है, तो उसने 30% का टास्क कंप्लीट कर दिया, 30% का उसने, आपने बोला मैं 100% पे ही पैसा दूंगा, 30% का रेवेन्यू बुक कर, जब 30% का करा तो 70 का 30% नहीं करा, 85 का भी नहीं करा उसने, फिर फूल का 50 रुपये ले लिया, बिकॉज फूल का प्राइस तो 50 रुपये का था ना, तो फूल का 50 रुपये ले लिया, तो 30 का रेवेन्यू बुक करना था, 70 का 30% तो 21 रुपीज का बनना था, बट उसने 50 का रेवेन्यू बुक किया, फिर बाद में उसने वो करा होगा, जब पैसे देने की बारी आई तो हमने तो बोला भैया 70 रुपये देंगे, रेवेन्यू तो 85 का बुक कर लिया। अच्छा जी, तो गड़बड़ हो गई, ये क्या करें?
तो ठीक है, तो हमने फिर अकाउंटिंग में छुपाना कोशिश किया, यार किसी को पता ना पड़ जाए कि मैंने ऐसा करा है। तो उसने बड़े ऑडिटर ने बड़े प्यार से लिखा कि ऑडिटर का काम ही छुपाना है, सबका नहीं है, बट यू पे you pay better audit fees to hide things better in better way. Not all auditors are like that, but few of my are few are favorite of mine. So revenue is recognized only to the extent it is highly probable that the amount will not be subject to significant reversals when uncertainty relating to the recognition is resolved. If there is a change in estimation, the reversal is ideally done netting off the amount from the revenue directly in addition. तो आप रेवेन्यू से नेटिंग ऑफ करते हो, उसने ऐसा बोल दिया, ऑडिटर बच गया, बोले भैया मैं तो बोल दिया सब, अभी कंपनी ने क्या कहा उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर इन्होंने बोला हम तो रेवेन्यू से रेटिंग ऑफ नहीं करेंगे, हम लोग प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट वाला लेते हैं। अभी इससे क्या होगा आपका, तो इवन तो आपको लग रहा है अकाउंटिंग है, आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि अकाउंटिंग सेटल नहीं होना चाहिए, और अभी आप अकाउंटिंग सुना रहे हो, अंग्रेजी तो आती पढ़ते हैं, अंग्रेजी आती है और नंबर के साथ कोरिलेट करो क्या होगा। तो इस कंपनी में क्या होगा, इसका इम्पेयरमेंट अलाउंस फॉर रिसीवेबल बढ़ जाएगा, और जो इसका अनबिल्ड रेवेन्यू का अलाउंस इट इज गॉट अप सिग्निफिकेंटली, एंड इट वाज 9-10% ऑफ द रेवेन्यू। कंपनी को बहुत हाई वैल्यूएशन मिला, 5,000 रुपये चले गया, फिर धीरे धीरे मैनेजमेंट गाइडेंस मिस करने लगा, नीचे आया, फिर हमारी रिपोर्ट आ गई, तो हमारी रिपोर्ट से फर्क नहीं पड़ा, बट इनडायरेक्टली फर्क पड़ गया शायद, then it came down to 400. So this is what you're going to pay in the end of the day. So 2 साल तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22 के बाद में हुआ, तो आपके फाइनेंशियल को कुछ आया ही नहीं, बिकॉज आपने जो पूरा बेस बनाया वो आपने फिक्टिशियस बेस बनाया, फर्जी रेवेन्यू पे बनाया, तो वो सस्टेन कहाँ करेगा। फिर आपने बोला एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था जी मेरा, उस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इशू हो गया था, इसके लिए सब राइट ऑफ आया था, अब मेरा सब कुछ क्लीन हो गया, अब मैं एकदम, तो अभी जो था चोर बने मोर, अभी जो थोड़ी थीम चल रही है मार्केट में कि सारी स्टोरी टर्न अराउंड स्टोरी है, सभी सब मैनेजमेंट को समझ में आ गया है कि मार्केट कैपिटल गेम जो होता है वो छोटी बड़ी चोरी से अच्छा गेम होता है। दे आर मोर सीरियस अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर फॉर देमसेल्फ। और ये जो मार्केट गेम गेम होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द बुल मार्केट होता है, जिसको रोज पैसा निकालने की आदत होती है ना, जैसे मार्केट नीचे आता है वैसे ही वो अपने पूरा करने का प्लान हो जाता है, यहाँ पे वो बैलेंस शीट से पैसा निकालेगा, टैक्स की चोरी करेगा। तो मैंने उसको रिफेंड भी करा। At other point, I'll just take it right now on my head point. We are seeing there is a large number of provisions. The provisions are over 7 years of the revenue. We are not returned on this provision in last 7 years. So 7 year revenue over the last 7 years, 7,000 crore. And provision are 100 crore rupees. It's only 1% or 1.4% of the total revenue pool. Because the tax benefit, we didn't want to take right off at the beginning. अभी टैक्स बेनिफिट कैसा है, वो बोल रहा है कि मैं पहले रेटिंग ऑफ कर लेता तो उससे मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाता, इसलिए मैंने नहीं करा, तो मैंने 7 साल में 7,000 करोड़ का रेवेन्यू करा है, तो ये तो 100 करोड़ का ही है राइट ऑफ, क्या फर्क पड़ता है, रिकंसल करके देख लो, 100 करोड़ हो रहा ही ज्यादा होगा। अब उसने जाकर यूज कर लिया कि टैक्स बेनिफिट नहीं लेना था इसलिए मैंने ऐसा करा, तो एनालिस्ट बोलता है वाह 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 जी वाह, आप तो बड़े विजनरी प्रमोटर हो। एंड राइट ऑफ वाज मच हायर। अब ये कंपनी के साथ में नई टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो R&D भी करती है, तो हमने इसकी R&D पॉलिसी देखी कि क्या कर रहे हैं, his R&D number is between the range of 17% to 12% over the 5 years. But if I look at the global company, it is the same thing.
their R&D expense is much higher, 28-29%. So it means आपका कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स आपका एबिटा रेवेन्यू फ्लेट मिल गया, एबिटा रेट कर, तो परफेक्ट केस ऑफ हाई ग्रोथ हाई मार्जिन कंपनी. तो दिस इज कैपिटलाइजेशन रेशियो. यहाँ पे 30 expenses around 39 40% to 50%. Globally capitalization is only 30%. So if you sum up this company and if you adjust this amount into the valuation model, then the conclusion will come that this company is not high growth because the 20% plus growth will come down to 10%. Second thing, because of the higher R&D expenses, capitalization of expenses, you are inflating your EBITDA margin. So if you adjust the EBITDA margin with the global, with the peer, maybe global or maybe local peer, yeah. So then EBITDA margin will shrink. Then this is not a case of a high growth, high profit company. This is a mediocre SaaS company which is delivering the average revenue growth and EBITDA growth as per the industry norms. And they are not growing faster than the industry. They are growing in line with the industry. So I'm going to give the multiple which industry commands. This is how you sum up the things and how you factor in. And when this company is stopped by 1,000 rupees or 900 rupees, the multiple was much higher. And as market realized that this number is not going to come, market punishes it. So it's not punishes it, but it's the readjustment of the multiple. So now your higher multiple will go up, premium will go up, and the normal multiple will come to. So 35 का multiple 17 का हो जाता है या 15 का हो जाता है. This is how you sum up the things. And don't try to look at the fraud कि आपको एक जगह ही बड़ा fraud मिले. छोटी छोटी चीजें पकड़ोगे, 10 चीजें मिलेगी, 10 चीजों को कंबाइन करोगे, then you will reach to the conclusion कि बस ये बड़ा fraud है. But the fraud will not happen in one place कि वहाँ पे 1000 crore का fraud मिल जाए. There will be 10th of the fraud in or 10th of the adjustment in the balance sheet, which will be 100 crore. If we sum it up, it will become 1000. So this is a very interesting company. Despite my negative report, this company is still hitting lifetime high, 52 times. They're showing a very good number. The business may be good. I don't have any issue with the business, but I have issued the accounting. So this is a card company. They're selling cards. So they do have three kind of revenue stream. One is the program fee, another is the platform fee. So and another is the gift card fee. So what happens, somebody comes to me that, I want to give, do expense management for my employees or make payment for my suppliers. So I'll use your platform. Automatically everything will be done to that. And, I want to give reward to my client, to my employees. Diwali bonus देना है और न्यू ईयर पे कुछ देना है. तो पहले क्या था, कैश देते थे भैया, 500 रुपया बोनस है, 1000 रुपया बोनस है. नाउ दे डोंट डू दिस. वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको मैं गिफ्ट कार्ड देता हूँ. आप गिफ्ट कार्ड पूछा दोगे, आप मिंत्रा यूज करते हो, आप अमेजन यूज करते हो, आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो. सो आपके लिए अमेजन यूज का नहीं है. अभी पर्पल का दे दे तो पीछे यूज आएगा, तेरे तो यूज आएगा नहीं. पर्पल गर्लफ्रेंडों की तो बातें लगे. So what they do, so these companies provide solution. You go to them कि मुझे सबको 1000 रुपए का देते. So they have type with everyone. So then आप क्या, when you go to your account, you see कि 1000 rupees का credit पड़ा हुआ है. You can have any card, whatever you want. Book my show करना, book my show का भी है, Amazon करना, Amazon. So it's a free choice market for the employee as well. कि मुझे जो मेरे यूज आएगा वही मैं लूँ. So incentivize both. कंपनी को भी इतना हेडेक नहीं लेना यार, ये कंपनी को पैसा दे दिया, वो मैनेज कर रही है, मेरा हेडेक खत्म. और एम्प्लॉय भी खुश है कि भैया मुझे जो चीज मिली मेरे यूज की है. ऐसा नहीं कि यार मिल गया मैंने फाड़ के फेंक दिया, मैंने यूज तो आ ही नहीं रहा, या किसी और को दे दिया, भाई तू ले जाए. So simple business model, fantastic business model, nothing wrong with that. These are the R as well for the small businesses. This is very, यहाँ promoter को बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है. You can hire one agency.
use all the services. अब if you look at this company, so प्रोग्राम फीस मतलब आप अपने प्रोग्राम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आए, आप एक प्रोग्राम बना के दिया कि ठीक है आप ऐसे ऐसे एक्सपेंस मैनेजमेंट करोगे, आप आपको मैं सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट करके दे दूंगा, आपके सिस्टम से मैं सॉफ्टवेयर बात कर रहा है, तो सीधे आपसे प्रोग्राम फीस ले, प्रोग्राम फीस प्लेटफॉर्म फीस से निकल आपने प्लेटफॉर्म यूज कर रहे उसकी फीस ले ली, गिफ्ट कार्ड की चल। तो इस कंपनी में क्या हुआ ग्रेजुअली, इफ यू लुक एट प्रोग्राम फीस हैज कम डाउन, और आपका जो गिफ्ट कार्ड का फीस है वो बढ़ गया। तो मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, उनका रेवेन्यू कम आ रहा है, जो कस्टमर गिफ्ट कार्ड ले रहे हैं उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसा होता नहीं है, हो रहा है। सर कंपनी क्या बनती है, अगेन थोड़ा अकाउंटिंग वाला है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पढ़नी समझ में आ जाएगी। कंपनी है, तो कंपनी क्या बोलती है, मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वो बोलती है कि ये जो कार्ड में बेच रहा हूँ, तो ये कार्ड जो बेच रहा हूँ वो मेरा पहले तो अल्टीमेटली कंपनी का ब्रोकर एजेंट राइट, तो उसको तो जो कार्ड पे कमीशन मिला वो उसका रेवेन्यू होना चाहिए। तो कंपनी ने अपनी आईपीओ के पहले अपनी रेवेन्यू की डेफिनेशन चेंज कर दी, तो मतलब मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ। तो जो कार्ड बेचे उसका पूरा रेवेन्यू मेरा है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे ऊपर, जो 315 का रेवेन्यू था वो 1500 हो गया एक साल। दिस इज नथिंग बट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब मैं एजेंट नहीं हूँ तो प्रिंसिपल, ठीक है। मेरी किराने की दुकान है, माल खरीदता हूँ माल बेचता हूँ, तो जो भी बेचूंगा सब मेरा रेवेन्यू। अब उससे समझाया कैसे होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में, उससे समझाया कि भी मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कार्ड देना मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेंटरी रिस्क मेरा है, ठीक है सर इन्वेंटरी रिस्क आता है, इसका प्राइस भी डिसाइड करता हूँ, वेरी गुड। और कस्टमर की क्रेडिट रिस्क भी मेरी है। सो एज पर इन डेज 115 मैं प्रिंसिपल बन गया। अभी उन्होंने आपको इतना इंडेक्स पढ़ाया और आपने इंडेक्स की किताब खोल के देखी नहीं, तो आपको इतना ही पढ़ना है। जब उसकी किताब खोल के देखोगे तो उसमें आपको डेफिनेशन थोड़ी और आगे मिलेगी। सो वो क्या बोलता है इंडेक्स कि आप कब एजेंट हो, अनदर पार्टी इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, द एंटिटी डज नॉट हैव इन्वेंटरी रिस्क, एग्रीड आप मैच कर दिया आपने, द एंटिटी डज नॉट हैव डिस्क्रिशन टू एस्टैब्लिश द प्राइस, भी आपने कर दिया, द कंसिडरेशन इज इन फॉर्म ऑफ कमीशन, ये भाई आप तो उनके पे कमीशन ले रहा हूँ, और आपने कॉल में भी बोला है सब जगह बोला है मैं कमीशन इनकम मांग रहा हूँ, आपने लोग ये सिर्फ ये एक चीज हटा दी, 6 कंडीशन होती है 4 दिखाई है जो मेरे फायदे की है, जो मेरे नुकसान की उम्र नहीं दिखाई, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सो इन दिस केस नॉर्मली अगर आप उस कंपनी में देखोगे तो अगर वो बोल रहा है तो हाउ यू चेक इट, चलो ठीक है ये अकाउंटिंग समझ नहीं आती, कंपनी बोलती है इन्वेंटरी मेरा है 1500 करोड़ का रेवेन्यू, इन्वेंटरी होनी चाहिए मुझसे, इन्वेंटरी नहीं है, क्यों नहीं है, इज इंटीग्रेशन बिटवीन द सब बिटवीन द एपीआई ऑफ अमेजन इंफ्रा एंड ऑल अदर प्लेटफॉर्म, जहाँ से डायरेक्ट ना इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे आदमी बाय करेगा वहां से आ जाएगा, देयर इज नो इन्वेंटरी, अमेजन का कार्ड 100 रुपए का 100 रुपए का वीडियो रहेगा, आई में गेट एट लेसर प्राइस, और मुझे इसमें कमीशन मिलेगी, बट इन द सेम देन आई शुड बी अ प्राइस मेकर, प्राइस डिसीजन मेरी होती है, देन माय मार्जिन्स और माय डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस फॉर चार्ज शुड नॉट डेविएट, शुड वेरिएट अलॉट, क्योंकि अमेजन पे कम मिलेगा कमीशन, मिंत्रा पे ज्यादा मिलेगा, कोई नया ऐप आएगा उस पर ज्यादा कमीशन मिलेगा, जैसे जैसे नया आएगा उस पर मेरा कमीशन ज्यादा होगा, बिकॉज आई कैन हैव जितना मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना मेरा कमीशन बढ़ेगा, बिकॉज जब मैं छोटा प्लेयर तो मेरा बार्गेनिंग पावर कम है, बट व्हेन माय रेवेन्यू पूल बिकम लार्जर माय बार्गेनिंग पावर इज हायर, सो मैं ज्यादा डिस्काउंट पे चीज ले सकता हूँ, तो माय मार्जिन शुड इंक्रीज, इस कंपनी में वो होता ही नहीं, जो मार्जिन 9 से 10% का वही रहता है।
So you are not a price setter, you are the price taker. You are just earning on the fixed commissions, despite the fact your volume will increase a lot. So adjust कर देते हैं. तो रेवेन्यू को एडजस्ट कर दो आप. तो जो कमीशन इनकम लिया है उसी को ले लो, आप बाकी को हटा दो. देयर इज नथिंग बट द अकाउंटिंग ऑफ ग्रॉसिंग अप एंड नेटिंग. तो जो 54% का ग्रोथ दिखता है, दैट ग्रोथ विल कम डाउन टू 8%. 22 का 23 का जो 49% है वो 3% पाया जाता है. वो 38% का है वो 26 का आता है. तो आप बोलोगे सर ठीक है, कर दिया, रेवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया, क्या फर्क, मार्जिन पे इफेक्ट नहीं आएगा, पैसा तो उतना ही बनेगा, प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट नहीं आएगा. देयर इज नो चोरी. ठीक है. मेरा पहला क्वेश्चन था, चोरी नहीं करी है, बट आप कंट्री को जब वैल्यूएशन दे रहे था, रेवेन्यू का मल्टीपल, प्रॉफिट का मल्टीपल बिल दे. दिस कंपनी शुड आइडियली टेक इन प्रॉफिट मल्टीपल, पी मल्टीपल का करेगी. आप रेवेन्यू को मल्टीपल नहीं दोगे. ना अगर उसमें आप एक और चीज देखो, तो वो बोलता है मेरा रिसीवेबल बढ़ गया, 50 दिन का रिसीवेबल 113 दिन से. तो ऐसा कैसे होता है, इससे बढ़िया मेरे कस्टमर से बढ़िया कस्टमर 30 दिन की पॉलिसी मेरे अकाउंट, 30 दिन का क्रेडिट पीरियड. तो मेरी सेल का ग्रोथ सब रेवेन्यू 31 मार्च में बुक हुआ है. क्या मतलब, तो उसने जस्ट आईपी के पहले राइट ऑफ ले लिया, 30 करोड़ का राइट ऑफ, जो 13% ऑफ रेवेन्यू. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्रेडिट पे दिया, पैसा आया, बट वो जो बोलता है उसके कॉन कॉल, से कॉन कॉल पर उसने बोला था कि नन ऑफ आई वर्क ऑन एडवांस क्लाइंट्स, भारी फ्यू बस, तो एडवांस पेमेंट पे काम करता है. ओके. सो फिर उसका राइट ऑफ क्यों होना चाहिए, इसका मतलब उसका माल बिका ही नहीं है, उससे रेवेन्यू. अब इंटरेस्टिंग चीज है वो, ठीक है भैया ये भी कर लियो, इन्वेंटरी रिस्क नहीं है, समझ में आता है, एपीआई है, टेक्नोलॉजी का जमाना. पेबल तो हो गया, पेबल भी नहीं है. तो आपका सिस्टम ऐसा तो नहीं है, एपीआई का सिस्टम है, तो उसमें आपने जैसे उसने कार्ड सिलेक्ट करा, अमेजन के वेबसाइट से उसने कार्ड दे दिया, और बैंक अकाउंट तो लिंक नहीं हुआ कि सिमिलरली आपका पेमेंट सेंड हो जाएगा. तो देयर शुड बी सम साइकिल, 30 डेज में साइकिल, 15 दिन में दोगे, 30 दिन में दोगे, 45 दिन में दोगे. उनमें पेबल भी नहीं आते. इंटरेस्टिंग, एडवांस में पैसा ले रहे हो, पेबल भी नहीं आ रहा है, राइट ऑफ भी आ रहा है. तो नो बडी इज एबल टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है. इसके लिए क्या होता है, उसका कैश फ्लो कोई बनता है. तो आप ट्राई करो, रेवेन्यू से चालू करो, रिसीवेबल पे आओ, टेबल पे आओ, then you go to कैश फ्लो, सब उलट पुलट. रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिख रहा है. रिसीवेबल ग्रोथ दिख रहा है, टेबल ग्रोथ, टेबल नहीं है, जीरो. तो रिसीवेबल का पैसा नहीं आ रहा है, इसके लिए कैश फ्लो नहीं बन रहा है. Got it? अब इस कंपनी में एक और इंटरेस्टिंग चीज थी. ये कंपनी बोलती है मैंने 15 करोड़ पर रेस करे बिफोर आई, प्राइवेट प्लेसमेंट करा. ठीक? फिर मैंने 50 करोड़ के एनसीडी भी इशू. उसका ऑडिटर एक और चीज बोलता है, बोलते देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी इनकम टैक्स. यानी उसके ऊपर उसने 1.5 करोड़ का पेनल्टी देगा, इज अराउंड 5% ऑफ द.
तेरे पास पैसा था, कस्टमर से भी एडवांस पैसा आ रहा था, रेवेन्यू भी बढ़िया आ रहा था, तूने मार्केट से पैसा भी रेस कर लिया, फिर भी तू पेनल्टी कर रहा है। या तो तेरा इंटरनल कंट्रोल वीक है, या तो डफर है, या क्या कर रहा है? वाई आर पेइंग सच हेफ्टी पेनल्टी? या तो 100 रुपये पे नहीं करे यार, सीए को डांट देते हैं, जीएसटी का रिटर्न कैसे फेल, कैसे लेट हो गया भैया, तू फाइल कर। मैं तो ऑफिस में सबको इंटीमेशन लगी, अगर 7 तारीख टीडीएस की है तो 1 तारीख को टीडीएस फाइल होना चाहिए, या 2 तारीख को होना चाहिए। वाई शुड पे फॉर डिले? और हम लोग वी आर नॉट देयर ऑर्गेनाइज, बट दिस कंपनीज आर, एंड दिस इज अ टेक कंपनी, यहाँ पे वो दूसरों को सिस्टम बना के दे रही है कि मैं आपका एक्सपेंस मैनेजमेंट करूंगा, आप अपने ही नहीं कर पा रहे हो, दूसरों का पेमेंट मैनेज कर रहे हो, आप खुद का ही नहीं कर पा रहे हो आप, और पैसा भी रेस करा है आपने, ऐसा भी नहीं है पैसा उसने ईयर एंड पे रेस करा है। अगर आप देखो प्राइवेट प्लेसमेंट जो हुआ था जून में हुआ था, एनसीबी जो रेस हुआ था वो नवंबर में हुआ था, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर में भी पैसा रेस करा, बिफोर ईयर में भी आपने पैसा रेस करा, तो आपके पास पैसे की कभी तंगी नहीं थी। अब इसका थोड़ा और आगे जाते हैं, तो स्टोरी क्या खत्म, अब एक और कंपनी की स्टोरी आती है। कंपनी बोलती है मेरे पास 22 करोड़ रुपए कैश है, जो करंट अकाउंट में पड़ा, जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमा रहा। तो अब रेवेन्यू था या नहीं था, डेटर्स थे या नहीं थे, कैश था या नहीं था, पेनल्टी पे करी, कुछ तो नहीं था, समथिंग वाज मिसिंग। अब इस कंपनी का रेवेन्यू का मल्टीपल देते। So again, so this is what a lot of example I give this. This is one of the fraud which has happened. वायर कार्ड का एक फ्रॉड है, जर्मनी में हुआ था, 2-3 साल पहले हुआ। सो मैंने जब वो फ्रॉड हुआ तो मेरा हम लोगों ने एक डैश बना रखा है, एक इंटरनल सिस्टम बना रखा है, टूल सिस्टम, थोड़ा देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है फंड वाइज। तो वही पकड़ना था कि मैं हमेशा देखता हूँ कैश हील कितना है, कि जितना कैश इन बैंक बैलेंस पड़ा उसमें कितना पैसा कमा है, दैट अमाउंट इज सब्सिडेंटली लो, देन वो कैश है ही नहीं। सत्य में भी यही हुआ था, वायर कार्ड में भी यही हुआ। इफ यू सी द कैश हील ऑफ दोस कंपनीज आर वेरी, नो प्रमोटर और नो कंपनीज दैट फुल उनका स्ट्रेस जो ऑपरेशन होता है वो अपना पैसा करंट अकाउंट में रखेंगे अनटिल वो का पैसा लास्ट में रेज हुआ। और यहाँ पे हमको पता है पैसा लास्ट में रेज नहीं हुआ, पैसा पहले रेज हुआ। एक पैसा जून में रेज हुआ था, दूसरा पैसा नवंबर में रेज हुआ, तो पैसा लास्ट में तो रेज नहीं हुआ, पहले ही पैसा आ चुका था। सो आई नॉट दैट फूल दैट आई एम कीपिंग दैट मनी। यार हम लोग तो एक दिन में पैसा छोड़ते हैं कितना, सेविंग में डाल देते हैं, करंट में नहीं आ रहा तो सेविंग में डाल देते हैं भैया, कुछ तो इंटरेस्ट आएगा, 4% का आएगा, ठीक है, कुछ तो आएगा। These companies who are running crores rupees of business and they are keeping a huge amount of cash into the current account, and इसका रेवेन्यू भी मैच नहीं हो रहा है, इसका रिसीवेबल मैच नहीं हो रहा है, पेनल्टी भी पे कर रहे हो आप, कैश होके भी 22 करोड़ का कैश है फिर भी आप पेनल्टी पे कर रहे हो। और ले लो आपने साढ़े 13 घंटे पे दिया पैसा, जीएसटी पे लाइबिलिटी 18 की होती है, एनसीटी से पैसे ज्यादा ले लेते हैं। ये सरकार को ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो, बिजनेस मैन हो आप, पैसा बचाओ, बिकम बी शेयर होल्डर फ्रेंडली। सो दिस हाउ यू टाई, सो सी यहाँ पे सब चीजें एक जगह नहीं मिलेगी। यू हैव पॉइंट्स, रेवेन्यू में एक जगह मिला कि इस रेवेन्यू में गड़बड़ करा है, देन रिसीवेबल का क्वेश्चन है, देन पेबल का क्वेश्चन है, देन यू हैव पॉइंट किया, ये कोई नहीं देखता है कि कितना उसने इंटरेस्ट डिले पेमेंट पे करा, एंड देन कैश का क्या होगा। सो जब इसको चारों पांचों पार्ट में मिला लो, and you try to triangulate between P&L, balance sheet, and cash flow, then you so this is how the card company is nothing but a house of card. This can collapse anytime. ठीक है, इसके बाद हुआ नहीं, तो रेफरेंस होनी पड़ती है। फिर इस कंपनी ने एक और बड़ा कार्ड करा, तो उन्होंने एक बोला ये लैपटॉप, हम आईपीओ पे सब आईपीओ लाए, क्या करोगे आईपीओ, मतलब आईपीओ से लैपटॉप खरीदेंगे। बहुत बढ़िया।
गेस कुछ स्लाइड गड़बड़ हुआ है। आज शेयर यू नया प्रेजेंटेशन ये जो स्लाइड ऊपर नीचे हुआ है ये शायद ये जो स्लाइड स्लाइड 2 पे बोला है। स्लाइड ये है। तो उन्होंने बोला 500 लैपटॉप 7.25 करोड़ के लैपटॉप आएंगे 500। एक लैपटॉप की कॉस्ट है 1.5 लाख। उन्होंने मॉडल नंबर भी दिया है कौन सा मॉडल खरीदे। मैं फोन भी लगाया कौन सा है आईपैड एप्पल का लैपटॉप था बोले तो बंद हो गया। तो तभी सस्ते में मिला मुझे वो तो। वो जब वो उसको 500 लैपटॉप खरीदे तो उस कंपनी के बाद में 273 एम्प्लॉइज थे। एम्प्लॉय तो 250 है और लैपटॉप खरीदे 500। एक एम्प्लॉय के पास 2 लैपटॉप और सबके पास आइए सबका लैपटॉप। हाँ 1.5 लाख का लैपटॉप यार मैं यूज नहीं करता 1.5 लाख का लैपटॉप इनको यूज करना है। तो आप टेक टीम को दोगे ना लैपटॉप बट आप सबको दोनों दो। और उसका आप देखो तो ग्रॉस ब्लॉक पर एम्प्लॉय स्पेशली कंप्यूटर कॉस्ट पर एम्प्लॉय देखो तो इट इज गॉन अप ड्रास्टिकली। तो उसके ग्रॉस ब्लॉक में मैक्सिमम कंप्यूटर 17,000 की कॉस्ट थी किसी एक एम्प्लॉय का मोटामोटी जो कॉस्ट पर लैपटॉप की जो कॉस्ट है 17 17 17,000 वो इंक्रीज हो गया 84,000। तो आप मतलब सबको आपने लास्ट 2 साल में नया लैपटॉप दिलाया और 1.5 लाख का नया दिलाओगे वो मतलब एक आदमी का 4 लैपटॉप हो जाएंगे। तो ट्रेनर हो गया ना जो 40 स्क्रीन लगा के काम करेगा एक इधर लगाएगा एक इधर लगाएगा। यहाँ पे स्क्रीनर चल रहा है यहाँ पे ट्रेड भी चल रहा है यहाँ पे ब्लूटूथ भी चलेगा फिर राउटर भी चला दोगे आप। तो अल्टीमेटली दिस इज अ बोगस। तो आपको पता ही नहीं कि हाउ यू गोइंग टू यूज दिस प्रोसेस जस्ट सेक ऑफ राइटिंग यू रिटर्न समथिंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू क्लीन। इसको मैं चेंज करके भेजूंगा। थर्ड कंपनी थी फ्लाई इजी। So these are very classic cases. But this company claimed to be having very high margins, operating margin, one of the best in the industry. जब आईपीओ की लाई थी तो लोग भी शॉक हो गए यार इतना कितना है। B2C पोर्टल में है। So if you look at this company expense profile compare with the peer in the Indian market, there you see a lot of discrepancy in terms of the expenses. इस कंपनी ने चोरी भी नहीं करी। इस कंपनी ने यही करा जो भी उसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी खर्चे थे उसने पहले आईपीओ के पहले उसने कैपिटलाइज नहीं किया। उसने अपनी बुक्स में सब एक्सपेंस हिट कर एंड बिकॉज उसने पहले एक्सपेंस कर लिए थे तो अब उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है वो कम होती है और अदर कंपनी तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में है और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट में है। बाकी भी दूसरे चार्जेस जो डजंट मेक सेंस। अब लाइक इस कंपनी में वेबसाइट होस्टिंग है ही नहीं। सो विदाउट होस्टिंग द वेबसाइट यू आर सर्विंग lakhs of people, you are selling tickets, you are selling hotel bookings and all those things. मेंटेनेंस करते नहीं है जो सॉफ्टवेयर तो फुल प्रूफ दैट इट डजंट नीड एनी मेंटेनेंस। या आपका डेवलपमेंट कॉस्ट हाउ इट लुक्स लाइक हियर एंड अगर इसमें भी था इतनी अच्छी कंपनी है चलो सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन पोर्टल है यहाँ पे लाखों मिलियंस ऑफ यूजर्स काम से ये टेक टीम का अच्छे लैपटॉप तो अच्छे कंप्यूटर तो इसका आप देखोगे तो 20,000 रुपए का पर एम्प्लॉय कॉस्ट आता है। 20,000 में कौन सा कंप्यूटर आता है तो कभी यूज नहीं करा 20,000 एंड सडनली इट हैज गॉन अप टू 40,000 2 years when IPO। So this will give you some time so एक कंपनी भी थी जिसमें हमने करा था तो MFI कंपनी they had around 400 300 branches and their branch rental per branch rental used to be around 4,000 3,000 rupees something like 3,000। 3,000 में कौन सा ब्रांच मिलता है। तो या तो उसकी ब्रांच ही नहीं है या ही अंडर रिपोर्टिंग इट।
बीइंग द एनालिस्ट हमारा काम ये नहीं कि सिर्फ चोरी पकड़ना, बट जब अपने मॉडल में फैक्टर करना तो क्या होगा, over the period of time that branch rental will go up and it will eat up the margin of the company, which has happened eventually. वो 3 साल वाला 21 साल 3 साल सिर्फ मार्जिन प्रोफाइल आपने जो खींचा था पूरा खत्म हो गया, आपका वैल्यूएशन मॉडल वही दो फॉर टॉस, आपका ओपीएम बनेगा, आपका आरओई बनेगा, बिकॉज यू आर नॉट फैक्टरिंग इन द कॉस्ट। कभी कभी ये नंबर होते हैं जो छोटे छोटे नंबर होते हैं कंप्यूटर पर कोई देख लो एक बार, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पर एम्प्लॉय कितना होता है, तो कोई मैट्रिक्स होता है यार, इतना एक बार देखिए डिस्क्लोजर कि इतना मैंने इतना मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करा है। समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको पता है, नॉर्मली आपको पता होता है ऊपर जा रही नीचे जा रही, उसका प्रोडक्शन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज गोइंग डाउन, ऐसा कैसे होता है भाई, तूने ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी लिया है। समटाइम्स व्हीकल कॉस्ट एज अ नंबर ऑफ पर व्हीकल कॉस्ट काफी कम आती है, कंप्यूटर कॉस्ट इज माय फेवरेट, तो काफी दिक्कत है। These are very small things which we never looked into. एक कंपनी थी उसमें देखा था तो उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट गोइंग अप बट पीएफ कॉस्ट वाज गोइंग डाउन, ideally it should be in sync with that. I know 15,000 से प्लस अगर कोई इसको सैलरी दोगे तो he has option whether to opt for PF or not for it. बट 80% नहीं करेंगे, बट 20% तो करेंगे, बट इट डजंट मीन कि सारे एम्प्लॉय 15 के नीचे ऊपर ही, there will be a lot of employees जो एडिशन हो रहे हैं, नीचे भी आपको एडमिन स्टाफ भी चाहिए, सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए, which where बस बेसिक सैलरी विल बी लेस देन 50,000, नॉट द थोड़ा सैलरी बट बेसिक सैलरी, तो ये पीएफ कंट्रीब्यूशन शुड गो अप, इट कैन नॉट कम इन रिवर्स डायरेक्शन, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गोइंग अप। ये कंपनी बोलती है कि यार कस्टमर कंसल्टेशन की बात करते हो, सो एक तरफ तो बोलता है कि नन ऑफ द कस्टमर, वन ऑफ द एक्सटर्नल कस्टमर जो एयर पैसेज ही कंट्रीब्यूट मोर देन 10% ऑफ माय रेवेन्यू, ठीक है, बट मेरा डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है and when 90% of the business come, more than 90% of business come from B2C. So अगर तेरा more than 90% business is coming from B2C, then how come one customer is contributing more than 10% of your revenue? Not possible. It should be less than 10%. It cannot be more than 10%. These two statement what you're doing, what you're making doesn't add up. The peer company says none of the corporate or other customer account for more than 10%. So this is not related to something related to business health. So उसका revenue profile भी same. So when you factor in this company, you adjust all the factors. Software cost that we CapEx करा उसको, then you see if ROE is into same or not. So then if you factor in all these numbers, his ROE is much inferior compared to the selling player जो करता है। तो एक कंपनी आई थी, शू कंपनी आई थी, एक फेमस कंपनी थी, उन्होंने बोला भैया हमारा ROE बेस्ट भैया, बहुत बढ़िया कंपनी है, तो यार नाम तो सुना नहीं कभी इसका, इसका ROE बेस्ट में बांटा तो बेवकूफ है जितने साल से करता कर रहा है, रिलैक्स तो भी गधा है, ही इज द मास्टर। फिर उस केस में आइटम देखा तो so you have the monetary interest, it's no non-controlling interest. So there's a line item known as non-controlling interest reserve adjustment account. तो ये एडजस्टमेंट अकाउंट वो भी नेगेटिव अकाउंट, नेगेटिव क्या होता है, ये तो कुछ नया कुछ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है बिलो द शेयर होल्डर्स फंड, तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो ना, यदि एडजस्टमेंट अकाउंट भी है तो वहां कौन सा एडजस्ट करता है। तो पता पड़ा उसने आईपीओ के पहले एक एक्विजिशन करा था प्रमोटर कंपनी का, एंड बोलता मैं इंडेस में आ रहा हूँ, तो इंडेस में हमने उस एक्विजिशन को वापस रीसेट करा, एंड जो मुझे गुडविल रिकॉर्ड करनी थी मैं गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट बना, तो जो गुडविल आपको ऐसे में दिखाई थी आपने उधर माइनस में दिखा लाइबिलिटी, इससे क्या हो गया, आपका आरओई बूस्ट हो गया, आपका आरओसी बूस्ट हो गया, यू बिकम बेस्ट इन क्लास, एक्चुअली रियलिटी और वर्स्ट क्लास।
तो इनफैक्ट जब फर्स्ट टाइम मैं किसी कंपनी में देखा था ये, तो आई चेक दिस कंपनी 3 टाइम्स, मुझसे भी मिस हो गया था, मुझे भी समझ नहीं आया, बिकॉज दीज आर नॉर्मल नॉर्मल रिच कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो है, उसमें तो नॉर्मली होता है, तो वी डोंट पे अटेंशन टू दैट। एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू डू दिस forensic any analysis, whether be it forensic or not, double check every ratio. Double check in the sense आपका आरओसी बढ़ रहा है, तो आपने 10 का बनाया आरओसी, 15 का आरओसी, 20 का आरओसी, आरओसी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? सो कंपनी का कैपिटल एलोकेशन इज गुड, कैपिटल एलोकेशन है तो मैं फ्री कैश निकालूंगा कंपनी में। आप फ्री कैश कैसे निकालते हो? ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल कैपेक्स माइनस इंटरेस्ट पेड, ये आपका होता है, मेरा ऐसा नहीं होता। मेरे में चौथा आइटम और आता है, माइनस एक्विजिशन, ठीक है? और जो लास्ट 2 साल का एक्विजिशन करें उसको माइनस, उसको हटा, उसको इग्नोर कर, उसके पहले जो 8 साल में एक्विजिशन करें वो इग्नोर, वो करें, दिस अमाउंट शुड गो अपवर्ड, राइट? आपका पैसा तो बनना चाहिए ना सिस्टम में, अगर आरओसी बढ़ रहा है तो पैसा बनना चाहिए, जो उस कंपनी में नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो मतलब नॉर्मल प्रिंसिपल को डिफिट कर रहा है। एंड देन आई कैन डू नो अबाउट दिस अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी कुछ होता है, इट इज अ माइनस, बट वो गुडविल है, इसका भी दिखाते हैं। So if you factor in your valuation model, then only you come to know this what is the true ROC of the company, what is the ROE is based on the company, and then you can value this company according to the valuation. So आपका जो एनालिसिस है वो पूरा गड़बड़, कोई सेंस नहीं, नॉनसेंस, because your underlying number itself has punched. So every ratio, whatever ratio you calculate, be it ROC, be it ROC, just double check it with the other ratio. मेरा एक रेशियो बढ़ा तो दूसरा रेशियो उस हिसाब से होना ही चाहिए। And this thing, lot of people ignore because when you are acquiring it, so it's one kind of capex होता है, you are buying the revenue. तो उसको फैक्ट्री 2-3 साल में हो जाता है, हम एक और रेशियो यूज करते हैं to see whether the capital expenditure done by the company is fictitious capex कितना हो, right? So 2 years ये like increase in capex to 2 years, after 2 years का revenue growth के साथ, तो आपको आज capex करोगे, 2 साल बाद तो revenue growth आएगा। अगर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है तो कैपेक्स आपने वो करा, उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगा, या वो कैपेक्स फिक्टिशियस था, वो सेट कर देता आपने। दीज आर द रेड फ्लैग्स व्हिच यू क्रिएट विद दिस रेशियोस, राइट? दीज आर नॉर्मल रेशियोस, मैंने कुछ क्रिएट नहीं करा, बहुत सारे लोग होते हैं, काफी सारी किताबों में लिखा हुआ भी है। डबल चेक एवरी आइटम, डोंट गो बाय द अंडरलाइन हेडलाइन नंबर्स जो उसने बोला है। आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्रस्ट, इट इज ट्राई टू मेक सेंस ऑफ व्हाई ही इज सेइंग सो, whether it is related to business or not. So एक कंपनी थी बहुत फेमस, पेपर इंडस्ट्री में बिजनेस कंपनी, पेपर कंपनी थी, तो कंपनी पे मैं रिपोर्ट लिखी थी, अपने गॉट बैंकरप्ट। तो मैंने जब उसका पूरा कंपनी पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया, कि मैंने रिपोर्ट लिखा उसमें काफी सारे बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर थे उस टाइम पे, तो मुझे समझ नहीं आया, लोगों को धंधा समझ नहीं आता है क्या? ट्रेवल का धंधा है, ट्रेवल का धंधा, तो उसमें डेटा डेज 300 दिन ज्यादा कैसे, तो 300 दिन का क्रेडिट दोगे तो धंधा कैसे चलाओ? नहीं होता है ना, पॉसिबिलिटी। आपको तो पैसा देना, आपको वहाँ एयरलाइन से कुछ 15-20 दिन 30 दिन का आपको क्रेडिट मिलेगा, होटल से कुछ क्रेडिट मिलेगा नॉर्मली, और इसको इधर कॉमन सेंस है। आप जाओ किसी के पास, गो टू मेक माई ड्रीम, गो टू होटल, और नॉर्मल एजेंट के पास भी जाओ, ट्रेवल एजेंट के पास, आप बोलोगे सर मुझे जाना है कश्मीर, जाना है, मेरा 4 दिन का ट्रिप था, ये ठीक है सर मैं आपका कर दे, तो आप 25-30 टका मुझे एडवांस दे दो, 100% पेमेंट बिफोर स्टार्ट योर ट्रिप, राइट? आपको क्रेडिट तो कुछ देता नहीं, क्रेडिट कहाँ होता है? सिर्फ कॉर्पोरेट में होता है, कॉर्पोरेट में भी कितना होता है, but ठीक है, वे अपनी जेब से पैसा लगा के तो ना आपको ट्रेवल कराया, वहाँ पे कंपनी में डेटा डेज ऑल्सो है, पर सॉरी।
That's it. Whatever question you have, Sir, just some time back you mentioned the adjusted formula of FCF if we should take a look at. So you mentioned it was CFO minus CapEx minus acquisition cost which you have put in for all the acquisitions prior to release. And you basically do it accumulation over years. And what do you do with it? 10 years. 10 years. So you accumulate that figure across 10 years and then how do you, what do you interpret? How do you interpret? So whether the company is making free cash flow or not, Okay. whether the acquisition whatever done by the company or capex done by the company is yielding result or not. Okay. So baseline business is the growth आती है, but ये still growth आती है. Got it. Fair enough, sir. Sir, while in certain businesses, the not exactly unit economics, but let's say taking a look at computer cost per employee or taking a look at revenue per dealer or taking a look at per square foot revenue or per square foot rent. These kind of unit, I wouldn't call it exact unit economics, but you get the point. So in platform business, what do you basically take a look at? Let's say a business like, without naming a listed company, but let's say a platform business. Platform business again, so see, you cannot take computer employee per Correct. cost per employee, but again, you know the tech team, right? So they give classification of the tech team and other teams, right? Right. They may be having a from there you can arrange. And again, it depends on the business to business, right? What kind of business it is. Right. As a platform company, you invest a lot on the technology side. There's a huge warehousing cost or AWS cost what we have. These costs are very important costs, and it becomes very high proportion of the revenue. Got it, sir. So the next question which we had was, so when we take a look at a business like, we ourselves have prepared a small list of checkpoints. Obviously, we keep on adding more. When we keep learning from experts like you, we'll definitely add quite a lot of few other angles as well, which we have incorporated here. And over the years, we have tracked your work and huge fans of what you have done. I think you had posted a Twitter thread regarding that exact negative entry on the equity side where you were talking about how people manipulate financials. So when it comes to taking a look at a business, because now that list keeps on, getting bigger and bigger, I'm pretty sure in terms of, let's say, while not everybody is having that luxury of time to take a look at all those factors for every business, can you name your 5 favorite factors which you would probably take a look at any particular blanket company? Though it may not always apply, but 5 favorite factors according to you in order of priority, which matter a lot to you and covers majority of the aspects which you would probably take a look at. To be honest, there's no such thumb rule, but for sake of saying, yeah, EBITDA to cash flow conversion is one of the best things I have. Cash is the biggest thing which I say for the fraud, especially. Correct. Because if you find a lot of companies whereby the cash is lower, the cash is lying into the foreign subsidiaries, and that cash is never ever there was a book entry. Correct. This is unfortunate for most of the companies in India, despite being the auditor I worked on. So cash is a balancing figure in the trial balance. Right? So, which is the truth. So I'm not exaggerating anything, but we have seen all this thing, and cash was obviously adjustment rebuild. Trial balance telling you like cash now. Right. Yes. That's why cash yield becomes very important for them. And look at the cash conversion cycle. Right? It's again a very basic one, but the moment gives me a lot of insights and what that. And again, receivable growth is a percentage of sales or unbilled revenue is a percentage of sales. Again, how does that? Yeah, I guess these are the 4 5 issues. Again, FCF is again my most favorite one, especially into the manufacturing businesses. The ROC is expanding. They're not making cash over the period of time. Right. Thank you, sir. We were doing something similar analysis where for a listed Indian company, promoters, or at least we thought, based on our limited understanding, that the promoter was shortchanging the investors. Now, without naming the company, when we did that analysis, we figured there was a footwear business which basically had a overseas arm through which they were dealing their products. Now, when we talk about this business, when we did that analysis over a period of, let's say, 10 years, the number which we could come up with was, let's say, 80-90 crore, which essentially went to the pockets of the
promoters, which would have easily gone to the investors. Now, the part where I've seen some of us struggle is how do you quantify it in terms of overall loss to the investors rather than just a 90 crore loss? And when you mentioned, try to incorporate it at a re-rating of a PE or something like that. If you can help me with a dummy example through which we can actually try and conclude in a similar manner for that case. Uh, so there are two kind of fraud. One you quantify, one you can't quantify. Yeah. This was the two can't quantify. Okay. And again, so this is most, I guess, this one principle is being taught to all the chartered accountants. Is what they call is a materiality concept. छोड़ना material नहीं है 1 करोड़ का. Right. When I was working at a company in real life, so it was a innerwear company, and they had stolen 1 crore rupees of amount of the company. When I gave to my client, I said, yeah, it's only 1 crore. क्या फर्क पड़ता? 50 crore का profit उसमें 1 crore गया क्या? Then I said, why you want to go on materiality of this? This is the intent of the money. Because I can, as I can forecast revenue based on the business dynamics. I can forecast the profit based on the revenue. But based on the intent, I can't say that आज 1 करोड़ का चोरी कर रहा है, कल 100 करोड़ का कर रहा है, तो 500 करोड़. I can't say. And वो हुआ बाद में, second बाद में पता पड़ा कि वो 1 करोड़ का नहीं था, वो 100 करोड़ का था. So then the intent is very important. Again, so that intent is very, again, how you should read it. And forensic analysts say, but we have to live in real world. That's the biggest strength which I have, especially while I'm doing finance business. See, मेरे report में लिखने के लिए मैं बहुत कुछ लिखता हूँ. But whenever I give opinion to my client, I talk to my client, I always try to triangulate this thing from a business perspective. यहाँ पे धंधा करना है तो फ्री में धंधा नहीं. जीएसटी वाले को भी देना है, इनकम टैक्स वाले को भी देना है, सबको देना है. अब देना है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो बैलेंस शीट से आएगा. बैलेंस शीट से पैसा निकलेगा तो फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बनेंगे, या कोई रेवेन्यू कम दिखाएगा, या कुछ तो करेगा. वो अपनी पॉकेट से लेके नहीं आएगा. तो ईमानदार आदमी को तो नहीं. So whether his intent is to make money for himself, or his intent is just, this is how business is been done. It's the cost of doing business in India. So that's why if you see the companies, manufacturing may be having the best companies like software company, the leakages are quite low. As we move towards traditional industry, manufacturing थोड़ा leakage बढ़ जाता है. As we move to infra, leakage बढ़ जाता है. India से ज़्यादा leakage बढ़ जाता है. But this is not he is stealing for himself. This is what he is stealing, or he is taking out, not stealing. Stealing is the wrong word here, but he is taking out, which is the cost of doing business in India. So then you are not going to punish the promoter. Whatever he is doing is the good intent. His intent is not to defraud the shareholder. But आप देख रहे हो ठीक है बहुत पैसा निकला है, अभी उसके घर पे बेंटली भी आ गई है, ये भी आ गया, सब कुछ आ गया. अभी 10 लाख की घड़ी करता है, then you realize because now he is taking money for it. It's not the same factor, sir. Got it, sir. So I guess intent, materiality is always higher, is having more importance than the intent, which is I follow my. Got it, sir. Thank you, sir. It helps. Now there are a few questions from our existing students and alumni asking. Let me try and relay a few questions. So first question is, how do you check whether if an asset has been lying under CWIP for quite some time? How do you check whether it is actually there? It's not something which is waiting for an opportunity to be washed off the books. Now we have the statement, the more disclosure coming in the fund statement. They give the aging of CWIP, yes. That is the only one way. From the dating of financial statement, you can do. Right. Other thing you can go on ground and you can talk to the where you can. Got it. Got it. Thank you, sir. Now, in terms of from an investment perspective, बात वही है कि पानी कितनी
पतली छन्नी से छाना जा रहा है, कचरा तो हमेशा ही मिलता है. So how do you go about taking that call कि इसके ऊपर I'm not going to take a look, and this is where I draw that line कि this is genuinely wrong, this is चलता है. So again, we questions ऐसा same intent क्या है? Correct. So I remember long back, one of the most trusted group in India. I wrote, they did some financial exercise. Highlighted them. I've been banned from all the meetings of management. But then I realized, because at the time I used to think like a chartered accountant. ये गड़बड़ है, ये गलत है. This is not as per the accounting standard. He has not disclosed the liability. But when I saw the intent of the management was to safeguard the company. It was not to defraud anyone. Correct. So that whatever he has done was, अगर वो नहीं करता तो कंपनी bankrupt हो जाती. उसने करा, तो उसमें गलत कुछ नहीं करा. His intent was good. वो अगर bankrupt होती तो loss किसको होता है? शेयर लोगों को loss. Correct. 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 But दूसरा promoter है जो कि he's taking money out and when you ask these guys, they'll give you the right answer. What is my intent? And जब भी कोई जब घुमाता है ना कोई चीज वो इंडेक्स टैक्स सेविंग टैक्स बेनिफिट की बातें करता है तो मेरे सिर के ऊपर पता लगेगा ये समझ सकता है. हिंदी में बताओ क्या हुआ था, ये एंट्री हुई थी, ऐसे एंट्री हुई. Right. Sir. So the intent becomes very important and you need to understand one thing कि इसको धंधे से कोरिलेट करना. Right. So एक कंपनी थी इस पे बीस में एक जीएसटी इनकम टैक्स रेट पड़ी थी. They under reported the profit revenue and हम लोगों ने कंपनी पे रिपोर्ट लिखा था. Before that, it was a topic. We said this company, buy this company and short others. ये आगे तो हमारे क्लाइंट यार मुझे पता ही नहीं पड़ता यार धंधा ऐसे होता है. तो दिस इज हाउ दिस बिजनेस ऑपरेट्स. तो यहाँ पे अगर आप इस फील्ड में धंधा करें तो 10-20% आपको वाइट में देना पड़ेगा बिकॉज टैक्स का है वो सर्वाइव नहीं करता है. तो वही बात है जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया साहूकार. तो but if like business is good, brand recall, brand is very solid, then I don't have any reason to punish the company. Correct. Because that's a trade. So you took up trade. Otherwise, you will not survive the. So वो आपको this becomes very I would say judgmental point, which whereby I guess that's why you need to understand or you over the period of time you try to read the promoter's mind. उसके दिमाग में चल रहा है. What is right? अब कोई promoter है who is having let's say who has like experience of creating 50,000 crore business. Business खराब हो गया, ऐसा चोरी करी, whatever he has done. Now he again come back with a small. 500 करोड़ का वो 50 करोड़ के लिए चोरी नहीं करेगा. So because it's a small company, so वहाँ पे थोड़े से disclosures कम हो. There will be lack of transparency. He will not punish those. हाँ बट जो शुरू से जो छोटा चोर होगा वो छोटी चोरी करेगा. तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. Just to try to read and promoter आपको कौन कॉल करता है जो इन्फॉर्मेशन मिलती है. May not be कौन कॉल but you have investor presentations, commentary होती है. तो how does उसमें कैसे वेरिएबल है वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं कि वो what you call is flipping on the things. आपने बोला सर साहब ये अच्छा ऐसे कैसे कंपनी की एमएस पे रिपोर्ट लिखी थी तो कंपनी को हमारी तो उस कंपनी से पूछा कि ये आपका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है सर, आपने प्राइस हाइक लिया था तो आपका रेवेन्यू तो इतना ही आ रहा है, तो प्राइस हाइक तो आपका इतना था तो आपका रेवेन्यू इतना होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है बिकॉज जो पुराने कस्टमर हैं उनके लिए प्राइस हाइक नहीं लेते. ठीक है वेरी रीजन. उसको नहीं पता कि हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग ने उसी पर क्वेश्चन ले सकते तेरा ये आपको इतना कैसे आ रहा है. व्हाट इज सही है तो फिर इसको रिपोर्ट पता पड़ी होगी बाद में किसने बोला होगा. तो उसने 2 क्वार्टर तक कॉल बोला कि नहीं प्राइस हाइक सबके लिए होता है. तो आप प्रमोटर आपको पता धंधा क्या है. You not lie on you not flip flop on your own statements. So one place where we have seen, and you being a chartered accountant, you can help us
the accounting experts in that domain, one place where we've seen is that there's a lot of and lack of clarity when there is a DTA accumulation or a DTL accumulation. So, what kind of red flags do you advise a budding investor to take a look at in such a business when there is a huge amount of DTL which is piling up and the cash taxes which are actually being paid are very little as compared to the income tax expense? See, first you need to understand what is DTA and what is DTA. Right. Very basic concept. वो सबको लगता है बड़ा बड़ा नहीं होता, सिंपल होता है. भाई दो बुक्स होती है, एक बुक होती है कंपनीज के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, एक बुक होती है इनकम टैक्स. मैक्सिमम डिफरेंस दो या तीन ही. एक होता है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, पर दोनों का डेप्रिसिएशन अलग होता है. एक होता है जो आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट जो होता है, आपने राइट ऑफ ले लिया है, अमोर्टाइजेशन का इफेक्ट, और डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस. जैसे कुछ एक्सपेंस होते हैं जिसमें मैंने उसको 30 डेज में पेमेंट कर तो ही मुझे अलाउंस मिलेगा, तो नहीं मिलेगा. तो इसके चक्कर में आपका डीटीए और डीटीएल पे. व्हाट इज डीटीएल? आपने आज टैक्स कम पे करा है, फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा पे करना है. तो द इनकम टैक्स, दिस लायबिलिटी इज नॉट राइट नाउ, बट दिस लायबिलिटी विल कम इन. डीटीए वो हो गया, आपने टैक्स ज्यादा पे कर रखा है एज पर कंपनी, तो आपको टैक्स कम है. ठीक है सर. तो डीटीएल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो इट मींस कि फ्यूचर में इस कंपनी की लगने वाला है. डीटीए का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है जब कंपनी डीटीए रिकॉग्नाइज नहीं करती. तो वी फाइंड लॉट ऑफ काफी सारी कंपनी में जो स्टेटमेंट होता है उसमें द कंपनी हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड डीटीए अबाउट दिस. नाउ व्हाई डीटीए इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड? डीटीए इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं हुआ बिकॉज वो जो कंपनी, जो सब्सिडी कंपनी है, जो कंपनी है, उसके पुराने लॉसेस थे एंड ही हैज नो वर्चुअल सर्टेनिटी दैट वो लॉसेस रिकवर हो जाएंगे फ्यूचर. सो इन अ वे इट विल गिव यू हिंट दैट वहां पे इम्पेयरमेंट आएगा. So this DTA becomes very important. Since if they're not recognized itself, then impairment आगे का तो सवाल ही नहीं उठता. If they're not recognized on the balance sheet. गुडविल तो रिकॉग्नाइज है, इन्वेस्टर तो रिकॉग्नाइज है, उसका इम्पेयरमेंट है, डीटीए का नहीं है. Okay, right. Makes sense. The period over which the derivative itself is not recognized, the period might be different. Absolutely. और अगर आपने डीटीए अगेन टैक्स वो आप उसको व्हाट यू कॉल विंडो ड्रेसिंग करते हो, अर्निंग मैनेजमेंट भी बोलते हैं. किसी साल में आपने ज्यादा कर लिया, किसी साल में आपने कम कर लिया. Right. Makes sense. Thank you. यूएस में काफी बड़ा कंसेप्ट है टैक्स सेविंग का कंसेप्ट है, जिसमें लोग काफी करते हैं. उसमें काफी सारी कंपनीज होती है, स्पेशली एक कंपनी थी इंडेक्स में काम करता था. उसका जो प्रॉफिट आता था मैक्सिमम, एक तो टैक्स सेविंग से आता था, टैक्स आता जो डीटीए का रिकॉग्निशन होता था उससे आता था, और सेकंड होता था उसका कंटीजेंट कंसिडरेशन. ये दो ही होता था जिसका प्रॉफिट आता था. उसको हटा दोगे तो उसका प्रॉफिट आएगा. I know we've taken already a lot of time. We'll restrict ourselves to last two questions. So the last but one question which we want to ask is, we've seen quite a lot of cases where not openly, but let's say the promoters have taken loan from the company either via or private entities, and they've basically not paid back the same, and eventually resulting into a huge loss to the investors and likewise. So do you typically see this in good times, or do you typically see these write-offs being caught in the bad times in your experience? Good time means as per the stock market. Yeah, as per the bull market, yes, of course, not the business. So see, but the bull market. that's all event होता है. COVID 2020. Yeah. Demand. ये जो इवेंट होते हैं ये सब राइट ऑफ करने के इवेंट होते हैं. ये सब साल में आप देखो राइट ऑफ होता है, बहुत सारा राइट ऑफ होता है. ये हो गया. Nobody is going to ask you because stock price is such a low rate. Correct. इतना नेगेटिव हो सकता है कि मैं 100 की जगह 50 दिखा दूंगा तो ठीक है ऐसा बात. But these are the best time whereby you know that how the सारा कचरा बना रहा है. So this will teach you a lot of things. Got it, sir. So the last question which we wanted to ask now, from our own experiences, we recommend our students to do a bit of a background check on the auditors by doing a simple Google search, or using resources like Watch Out Investors or any other publicly available information forums. If you can please suggest any particular publicly available forums or databases or websites which these students can take a look at to be able to make sense if
to be able to make perspective about the macro picture where the management has been involved, rather than just being too much focused on the micro aspect of things. I don't know what. I do all this thing for my channel checks. Okay, I speak to the value chain suppliers, got it. to the competitors, what is happening, especially on the underside side. Right, Because those guys are in better position to tell you the truth, what is happening. right, sir. Because forum में क्या होता है ना, sometimes it may be propaganda. हाँ, And यार मेरा हमेशा मानना है कि एक इंसान के anyone has to like you as Finacle you have a soul. After Finacle you have your own life. correct. तुम्हारी लाइफ में कुछ भी करना मुझे करो. Everybody cares about what you do. Correct. Being Nitin Mangal, what I am doing as an analyst, वो मैटर करता है. Being Nitin Mangal as a person, मैं अच्छा फादर हूँ, अच्छा हस्बैंड हूँ या नहीं, doesn't matter. तो वहाँ पे काफी सारा ना पर्सनल चीजें हैं. यार वो हर किसी का ही लाइक विजय माल्या, ये तो ऐसा करता है, ऐसा तो मेनी टाइम्स इट डजंट हैपन. इंडिया में बाकी बहुत सारी चीजें होती है ना कि लॉट ऑफ सो व्हेन यू डू स्टेबल बट चैलेंज स्ट्रक्चर, तो उसमें भी जो इनपुट क्वालिटी होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Right. सो आप किसी से बात करोगे, वो बीबी से झगड़ा करके आया तो खराब ही बोले. या ही मे बी डूइंग वेरी गुड बिजनेस कंपनी, लाइक तो एक बंदे से मिला था मैं, तो ही वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंपनी सिंस लास्ट 20 years. कंपनी खराब है, इतना हमको इतना माल भेज देती है, हमको टारगेट पूरा नहीं होता है, हर बार नया टारगेट बड़ा, तो 20 ले लेता भाई. Correct. उसका घर खरीदना, उसका सब बन गया प्रॉपर्टीज कंपनी से, बट डिस्पाइट दैट ही इज क्राइंग. Correct. बहुत सारे लोग आते जो रोते रहते हैं. तो आई गेस यू हैव टू be away from those noises unnecessary, and you have to read between the lines the underlying क्या है. So I feel मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ. और इंडिया का सेगमेंट ठीक होता है इस लॉट. जितने भी सीए हैं सब स्टॉक मार्केट में खेलते हैं, तो स्टॉक प्राइस बढ़ा तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है. स्टॉक प्राइस क्या था, वो देखना करना, तो ऑडिट करता हूँ, मुझे पता है क्या करता है. I think that part was extremely valuable, that answer, and I can completely relate to it. When we get access to a lot of other information which may not be relevant, we try to paint the picture black and white depending on the other information which actually doesn't make sense or is irrelevant to the question. That's actually very, very good input from your side. So thank you so much for that. Sir, I'm really sorry. Just one last question, sir. ठीक है यार, मेरे को Sir, if you can please recommend few reading materials to our students, so that they can actually, again, There's a toughest question for me. There are few books, I guess, which I read, I haven't read that book, but I heard about it. I'll send you the name, I guess. Because no foreign book has been written in Indian context. right. That's the biggest issue what we have. A lot of people ask me write a book on Indian context, but I'm not a good writer, so I don't know how to do that. But I always read a lot of books which are not financial nature. And why? So yeah, I'll just give you a background of myself. Who am I was and who am I right now? 2007, I wanted to come into equity market, as everybody got passionate about equity. आ गया, ठीक है, क्या करना है, बोला क्या, तो जॉब नहीं, सब सीएस को जॉब नहीं मिलती इक्विटी मार्केट. फिर ऑफर आया कि यार अकाउंटिंग रिसर्च करना था, जो भी ये क्या फर्क पड़ता है, इक्विटी तो है ना, करेंगे. फिर इक्विटी रिसर्च करने लगे, अकाउंटिंग रिसर्च करा, यार ये कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है, क्यों करना, टाइम पास करता है. आई वांट टू बी सेक्टर एनालिस्ट. तो सर हमारा एक एडमिन वाला बंदा था उसने, तो एवरीबॉडी आस्क्ड द गोल, राइट, व्हाट इज द गोल. तो क्वेश्चन होता है मैनेजमेंट, तो आपको प्रिसाइज टाइम के हिसाब से बोलना है कि व्हाट इज योर गोल. आई वांट टू बी फंड मैनेजर इन 5 years. वेरी गुड आंसर. ठीक है, फिर जैसे फिर किस्मत से हमको इक्विटी से लिया, सेक्टर में लिया नहीं, तो मैं बन नहीं पाया, अकाउंटिंग में रह गए. ग्रेजुअली रियलाइज की इसमें मजा है, आई मीन इनका मतलब पैशन यार, और सब यही करना. एंड एज आई मेट मोर फंड मैनेजर्स, मोर एनालिस्ट, मोर सीआईओस, मुझे डफर नहीं मिलता है. और दे आर नॉट डफर, बट आई नॉट, बट मुझे लगता है कभी कभी यार
बहुत सारे लोग मुझे बात करते हैं अगर अकाउंटिंग और मैं बोलता हूँ आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर, बट आपको पता है कंपनी के बारे में, एंड व्हेन यू टेल देम अबाउट द अकाउंटिंग थिंग दे वाओ, यार वाओ आपको नहीं बोला कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ यू आर इन्वेस्टेड टू दिस कंपनी, सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. You are managing money of somebody else. It's not your own money. Correct. There, a lot of responsibility comes on your shoulder. And being the prudent manager, asset manager, you have to do all this. So कहीं ना कहीं वो चीज हट गई सब, बट उस टाइम अकाउंटेंट ही थे तो वही हर चीज को बाल की खाल निकालना, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा. एंड देन आई रियलाइज कि यार ये अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया. वन फाइन डे माय बॉस आस्क्ड, ये उसको पता है मैं कभी खुश नहीं होता था नॉर्मली, मतलब तो आई यूज्ड टू बी डिफरेंट गाय एट द टाइम. सो आई एम एंग्री यंग मैन, बॉस से झगड़ा करना, चिल्लाना, किसी से झगड़ जाता था. एंड आई नेवर यूज्ड टू बी हैप्पी इन लाइफ. क्या है, क्यों करना है, ये खराब है, वो खराब है. एंड देन वी गॉट वेरी फेमस, और प्रोडक्ट गॉट वेरी गुड रिकॉग्निशन. तू आज बहुत खुश होगा. सर क्यों? तो नहीं यार, अब तो इतना अच्छा हो गया, अब तो इतने बड़े फंड आ गए, सब आ गया, तो यू शुड बी. हम क्या कर रहे हैं, 3 साल से एक ही चीज लिखे आए हैं. अभी आपने बोला इस कंपनी ने चोरी करी है, 7,000 करोड़ तो निकाला है, क्या करूँ उसका? एज अ फंड मैनेजर आई शुड नो व्हाट शुड आई डू. तो एज अ एनालिस्ट मुझे इसको बताना पड़ेगा ना क्या करना है, तो इसके आगे जाना. लेट्स डू रिकमेंडेशन. इसका वैल्यूएशन एडजस्ट करो तो क्या है, being the sell side investor, no, this is not a good idea. We have other analysts who are giving recommendations. सिर्फ एक ही हाउस से 2 रिकमेंडेशन के साथ they thrown out my idea and again become sad, angry. Then suddenly life में change आ गया, great आता है. So then I realized, and then we used to do lot of this. आपने को बताना चाहिए चोरी करी जो the example that what I was giving, right? So valuation document में adjust करके देखो, then see whether the company is expensive or it's cheap. You may find despite doing lot of चोरी, so एक कंपनी पे रिपोर्ट लिखा है against my nature, highly misnown company, सारी दुनिया भर की चोरी करी उस कंपनी में, and I had buy recommendation. नितिन तो मतलब किसी ने मुझे बोल दिया था कि यार नितिन अगर ये बोलेगा इस कंपनी में बाय, तो बोला किसने बाय को लिखा है, बोला नितिन ने इस कंपनी में बाय लिखा होगा तो हमने सर उठा होगा. मैं लिटरली लिखा था, मैं सामने बैठा था, मैं क्या बोलूं उसको कि उठा ले भाई. But my point is that this company का underlying value is such high, it is punishing him now. So आप उतना भी punishment, आप 50% डिस्काउंट मारो. What we have done, we have given 50% discount, and despite it, वहाँ से 3 times salary company. So then as a investor manager, I'll go and buy the company. और या तो मेरी philosophy है कि बस I'll not touch bad company. So I give option to my clients. वो जब हमने देखी तो उसका जो hypothesis था और कैसे रैशनल बाइंग रैशनल देर बेच का था, और रिस्क जो थी वो पिक्चर्स पे थी, ये रिस्क है, ये रिस्क है, तो दैट इज मैनेज. बट देन इट्स कॉल अप फॉर द इन्वेस्टर व्हाट कॉल दे वांट टू टेक. तो ये करते करते क्या हुआ, तो देन आई रियलाइज आप सोचो अकाउंटेंट जैसा चोरी करने से यू टू ब्रॉडन योर थॉट्स. सो आई स्टार्टेड रीडिंग. तो मैंने काफी सारी बुक्स पढ़ी जो मैं, तो इट्स अ बुक ऑन कर्ण, कि अगर आप महाभारत को कर्ण के हिसाब से देखोगे तो क्या हो, तो देन एवरीबॉडी हीरो विल बिकम विलन. बट देन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द अदर, बस ऐसा फिलॉसफी वहां से दिस बुक्स आर माय फेवरेट बुक्स, whereby you will get lot of thought process कि I can think from other perspective that it is right or not. अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता, and it will make you better analyst. I think so. मेरे लिए आगे मैं तो एक better analyst बना हूँ. Correct. But I think like my thought process brought up, right? I don't look at one angle, one aspect of that कि बस चोरी के लिए मारना, ऐसा नहीं. Thank you so much, sir. It was an amazing session. I'm afraid we have to request one more session from you if you'd allow in near future, and we would love to again gain more insights from your learnings. I don't think a 2 hour session is going to be enough for us to quantify what we have learned today. I'm pretty sure most of us are going to revisit the recording and try and make notes more. So from entire Finacle team and from our students and alumni, I would like to thank you from bottom of our hearts for taking out time and going over and beyond for the budgeted time. Thank you so much, sir. It really means a lot to It's us. my pleasure. So I'm always to teach. So ऐसा नहीं है कभी भी कॉल कर दूंगा. I have not हमारी अडानी
बीजे वाला काट दो। Thank you, sir. I'll stop the recording.